मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ. क्या हो गया भाई? PR. Gonna use this as a reel, no? See what I mean? Subscribe to Dostcast. Yo, what is up? Welcome to Dostcast. आज की हमारी गेस्ट हैं प्रेरणा के उभान, who is creative development specialist at a big OTT platform जिसका नाम रिवील नहीं कर सकता, but I got her on because she is arguably one of the smartest content consumers I have seen. She is also former manager at OML, only much louder, जहाँ पे देश के सारे प्रसिद्ध comedians अब काम करते हैं. This is a great episode for anyone who's interested in getting into comedy, what it means to be a manager, how to manage talent, and how to collaborate with creatives. Uske beyond, lots of interesting insights about content. She's an avid Dostcast listener, so we were talking on Instagram a bunch. It was great to get her here and have her insights out. तो काफ़ी मज़ेदार एपिसोड है. If you're new to the channel, consider subscribing, क्योंकि हम हर Tuesday, Friday एपिसोड डालते ही रहते हैं. बहुत बार एपिसोड डालते हैं, आपको पता ही है. The episode with प्रेरणा के उभान starts in 3, 2, 1. Yo, Prerna K Obhan in the house. Hey. This is Dostcast Specials, Mumbai. We out here simping on mics. क्या हाल है यार? We were talking once on Instagram, then I realized you're quite a big shot here in Mumbai. Big You work shot for to a me, but yes, I am important. yeah, you work for a major OTT platform Yes. where you're the woman who decides कि यार इस पे लाल बटन दबेगा या green. You're the one who sort of ends careers for several writers, right? There is a team. I am a part of that team. Yes. I just saying कि मैं decide करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा power हो गया मेरे हाथ में. Right. But that's I work for the team yeah. that figures के क्या content produce करना चाहिए हमें. But that's not how you started. You started off as a manager for several top comedians, including Anirban Dasgupta, Rahul Subramanian, Biswa Kalyan Rath. You also worked with Zakir at OML, right? Yes. Even before that, I used to work for a comedy club called Canvas Laugh Club Yes. back in the day. That's how I started. This is in Palladium Mall. Yes. Yes, I've been there once. I saw Really? Rahul Subramanian show. What year did you go there? I went there in 2018. हाँ नहीं, तब तक मैं OML में थी. अच्छा ठीक है. Because I was surprised कि the content that he did there has never ever aired on YouTube or anywhere else. Oh, really? Yeah. वो It अभी was भी very शायद- political. Yeah, मतलब there were jokes that I think he took liberties with that he would never do on YouTube, owing Really? to censorship and stuff. Yes. Subramanian usually isn't that kind of a comedian who would do political content. Maybe that one night Yeah. he was, but yeah. थोड़ा mic pass कर ले. मेरे को मेरी आवाज़ ठीक सुनाई दे रही है. हाँ मेरे को sound तेरी वहाँ पे कम आ रही है ना input, that's why. तो मैं जोर से बोलूँ? हाँ. Usually मेरे को सब बोलते हैं प्रेरणा आराम से बोलते हैं. नहीं, The first you're time कोई fine. बोल रहा है कि जोर से बोल. You're fine. Yeah, but like, no, it was weird. One thing that I wanted to ask you straight off the bat is, when you were managing artists, ठीक है? Is it just a problem of managing their egos, or do you also did you help them decide the shape of their career? Okay, so I think that artist management is twofold. अगर तुम्हें सिर्फ उनके egos manage करने हैं तो you can be that manager और जो सिर्फ egos manage करते हैं. But those guys exist, right? Yes, there are. Mostly there are a few artists who feel that their managers are their PA. कि इनसे हम वो काम कराएंगे, मेरा मीटिंग बुक कर दे, मेरी फ्लाइट बुक कर दे. But with me, and I think I was fortunate enough that the artist that I was working with always looked at me as a collaborator, and it was a equal partnership. Both of us were working to make their careers better. Right. So that way I think I was fortunate enough to be working with those artists कि अगर मैं कुछ बोलती थी तो मेरे opinion को enough value दिया जाता था, and it was always a discussion. It wasn't कि वो उनको कुछ करना है और मैं सिर्फ वो एग्जीक्यूट करती थी, या मैं उनको कुछ कहती थी कि ये करो तो वो करते थे. इट वाज ऑलवेज their viewpoint, my viewpoint, and we would work together. Right, but wouldn't you say, like, for example, you're not a creative, right? You're someone who manages people. So how would you then have the authority to say कि यार तुम ये करो, and why would people trust you? I think there is something called creative instincts, and I think I always had that. इस करके अब जो मैं नौकरी कर रही हूँ वो purely creative है. Like literally, nothing else. Like it's just taking creative decisions all the time. Right. So I feel like creativity usually comes from within, and I always had the knack for that. You know what I mean specifically is like, why would an artist trust someone who is their manager to say कि यार इस set के अंदर say this instead of that? Like, where do you build that credibility from? यार ये तो मेरे को भी नहीं पता कि वो क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड हो गई. बट इट्स ऑलवेज अ डिस्कशन, राइट? अगर मैं कल इफ आई एम अ सेकेंड पेयर ऑफ आइज टू योर कॉन्टेंट एंड आई एम टेलिंग यू कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ऑब्वियसली व्हेन इट्स अ डिस्कशन देयर आर वेज दैट आई कैन प्रोबेबली कन्विंस यू कन्विंस मी द अदर वे, राइट? तो इट्स दैट. Yeah.
several artists. And maybe like it's one of those, right, कि चलो एक बार तुमने कुछ बोल दिया कि ये करो, and उनने अगर आर्टिस्ट ने ट्राई किया and it starts working, that's when they know कि okay, this opinion matters to me. There's the notion in several industries about artist managers forcing their clients to do unethical things for the sake of getting clout, followers, money, and अक्सर पिक्चरों में भी ऐसा दिखाया जाता है ना कि वो एक आर्टिस्ट अपने दिल को कम्युनिकेट करना चाह रहा है और ये दुनिया है जो कैपिटलिस्ट काम करे. There's all the stupid tropes that exist, right? Yeah. How true are they? Like have you told people to submit their visions to something that's just better off overall? Not really. I feel like at least in India right now, a lot of people there are very few people who are in it for the art form. There are a lot of people who are here to make money, right? So it was never a conversation of के अरे अगर मैं ये brand deal कर दूंगा तो मैं मेरा ego बेच रहा हूँ. नहीं, सबको काम करना है, सबको पैसा कमाना है. तो वो thing मुझे लगता है काफ़ी clear थी. तो ऐसे conversations तो कभी नहीं हुए. But I once, this is kind of an interesting story. I once fought with an artist because they weren't as disciplined with their craft and career as I wanted them to be. You know, and that's when we had like a big blowout because I was just like, you have a lot of potential, you should be putting in more hours, you should be doing this, that, and that artist was just like, nahi, mujhe itna hi karna hai filhal. Yeah. And that's when I realized that I can't just be aggressive with every artist. I have to mold myself to work with different artists and understand that what they want to do and change my vision accordingly. It can't be a one shoe fits all. But would you say it's harder to work with certain high conflict artists? Like for example lete hain from another industry, like Conor McGregor, right? जो UFC के अंदर है. Dana White, the president of the UFC loves him because he's not only just a good fighter, he's also a great entertainer. But he's a nightmare for his PR staff because he'll say stupid stuff and then back it up, whatever. So in that sense, have you had to work with clients who are like high conflict but they pay really well or people love them? नहीं यार, मेरे सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, सब अच्छे इंसान थे. Do comedians? No, like I've never faced that issue, but there's always been obviously some people in the industry के कुछ ट्वीट कर दिया कुछ और हम सब बाद में डिस्कस करते थे कि ये तो नहीं करना चाहिए था. पर हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं. Could you maybe run me through like one or two incidents ऐसे हुए where an artist said something that was unparliamentary, then you had to go walk back and like make sure कि the damage was controlled? Actually, I can't really think of anything right now. Does it make it harder for other comedians that putting himself on the line and doing a lot of political stuff? I don't think so. I really don't think so. There are a lot of comedians who do what they want to do and they're okay on the internet. Just because one comedian is going out there and talking about politics or putting his thoughts out there, I don't think so it impacts the industry as a whole. Right. मुझे नहीं लगता. एंड ऑफ द डे थोड़ा रेपरकशंस होता है. अगर कमेडियंस के शोज कैंसिल होते हैं तो सबको बुरा लगता है बिकॉज एज एन इंडस्ट्री इट फील्स लाइक दैट यू आर फेलिंग. बट आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन अदर कमेडियंस. देयर आर अ बंच ऑफ पीपल हु आर डूइंग गुड सैनिटाइज्ड वर्क एंड दे आर डूइंग देयर जॉब वेल. Yeah, sanitized work. Yeah, for sure. Yeah. It is sanitized. If you were Veer Das's manager, yeah. I don't want to be. Can I not put myself in those shoes? I really don't want to be. What would you say कि वीर ये कर या मत कर? मुझे लगता है कि वीर ने जो किया गलत नहीं किया. तो अगर वो मुझे वो वीडियो दिखाता और बोलता कि मेरे को ये पब्लिश करना है, मुझे करना चाहिए कि नहीं, मैं उसे बोलती कि यस ये तो पब्लिश Yet he got so much backlash from comedians in India. Why? But I feel like that's how people are targeting certain people right now, right? And you can see that. I don't think whatever Veer said was okay. It wasn't. I think there are a lot more worse things that other people say and get away with. But just because Veer Das has a clout and he is the person that he is, कि वो internationally अपने आप को present करता है, तो उनने वो पकड़ के उसके ऊपर बात का बखंदड़ बना दिया. तो उसका कुछ कर नहीं सकते. पर अगर मुझे कंसल्ट करता वीर तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ गलत है. Yeah. Do you, and I'm asking these questions only out of pure curiosity, but have you ever deliberately told someone कि hey, don't do this because ये XYZ ऐसा हो जाएगा and it didn't happen and then the artist got pissed off at you? पर अगर उसने वो किया ही नहीं तो कुछ कैसे ही होता. No, what I mean to say is, for example, some artist comes to you with a very controversial idea that could potentially get him or her to the moon, but you are playing conservative and then I think as a manager I was never conservative. मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी किसी को कहा है कि ये मत करो. It was always be like कि मुझे लगता है कि ये
अगर हम करेंगे तो ये हो सकता है, but end of the day the decision is with the artist कि उनको क्या करना चाहिए. Let's say you know someone works for Cadbury, a marketing executive at Cadbury, right? You represent a bunch of comedians. You have to go say pitch Anirban Dasgupta कि यार please जाके ना एक हमें कोई collaboration करनी है. How would you do it? Would you send a pitch deck? Would you go and say कि इसका special देखो? How would you do it? वो मेरा काम नहीं था करना. What do you mean? As a manager, I wasn't. So what do you manage exactly then? Their careers, but not their brand deals. Okay. How do I explain this? We would look at their career holistically, and then because I was a part of a company and I wasn't an individual manager, OML had like a bunch of different divisions that would do things. Right. So for us, at least for me as a manager, it would be like, okay, 5-star is planning to spend XYZ amount of money. They need ideas. So we would sit with the comedians, jam on ideas, and then send it back to the sales team कि जाओ ये बेच के आओ. Right. तो बेचना मेरा काम नहीं था at OML at least. Yeah. So like how do you manage someone's career holistically? I'm not sure I understand. How do I explain this? Like would you say कि यार do 2 shows instead of 3? Or you know talk more about your childhood experiences in your set, like is it all of that? तो yes, मतलब content में content तो करना ही, but कि okay ठीक है, अगर हमें साल में हमें कहाँ पहले तो as an artist तुम्हें अगले 5 साल में क्या करना है? What do you want to do? You really had those conversations with people who were like आपको 5 साल में क्या करना है? Yes. Yeah. Why? I mean, as an artist तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि तुम्हारा करियर ये नहीं है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, right? Yeah. तुम्हें grow होके क्या करना है? जैसे Anirban, for an example, when he started working with OML, he was a stand-up comedian, but he always wanted to be a creator. He wanted to write shows, and that's one thing that like we as OML made happen for him. Like Afsos is a show that he had the germ of the idea. OML ended up selling to an Amazon. The one with Devaya Bhopana. No. No, sorry. Devaya. So Devaya Bhopana is the EIB guy. Yes. Yeah. Gulshan Devaya. Yes. That's his name. Devaya is a first name and a last name. Yes. Wow. Okay. Gulshan Devaya. Yeah, that was a weird show. It had, an interesting and funny show. It had Jamie Alder as well. Yes. Tom Alder का जो भतीजा था. Yes. हाँ. Super cool show. हमें ढूंढना था कि एक कोई गोरा इंसान जो हिंदी बोलता है. That's literally the whole family. I had Tom Alter का जो भाई है, Stephen Alter, he's a writing professor on my other podcast, and those guys, except for Stephen, everyone in the family speaks Hindi. It's very weird. Yeah. Because they were part of India और यहाँ पे locally most places में I would want to say कि हिंदी बात करते हैं. हाँ, एक बार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर टॉम ओल्टर बैठा हुआ है, तो कोई पत्रकार पूछता है, सर आप हिंदी कैसे बोलते हो इतनी अच्छी? तो बोलता है मुंह से. Oh my God, आप कितने funny हो. But yeah, that's crazy. Yeah. So with Anirban, he wanted to eventually get into films and create. He wanted to write and create. So we spent our energies making sure that happens for him. So yeah. But how would you do that? Would you like get him gigs where you're like, okay, let's batch your shows together so you have time to write? Yeah. Like we would dedicate months के okay ये महीने में हम stand up करेंगे पर ये महीने में हम writing में focus करेंगे. Make sure that he is in those rooms where there are people who are like right now I'm on the other side of things where people want to be in that room. Yeah. But earlier my job was to make sure that there were our artists always like in chatter, people having conversations with them meeting a lot of producers, OTTs and stuff like that. When you say your artists were in chatter, what do you mean exactly? Like constantly people talking about them in rooms where these people are. एक सेकंड रुकिए, मैं इसे चला देता हूँ, गर्मी हो रही है. एक सेकंड. कर ले. Chatter, you were saying. Chatter. Yeah. What was I saying? कि people are constantly talking about your artists. How would you do that? It's very difficult to explain, but like when say if we're in a meeting for like with a platform or with an agency and we're talking about one thing, but you make sure that they know that these other artists are also doing these other things. Like your agenda is not to talk about them, but you drop like okay, XYZ people is all like XYZ person is also doing things like this. Right. So that's how people know. Yeah, because I mean, I see your Instagram. I see a lot of comedians follow you. You're sharing those casts quite a lot. Yes. Right. In a way, like this podcast gets exposure to say people who would normally not know about it. Right. Yeah. Like just today while I was on my way here, someone messaged me asking, "What are you doing?" And I'm like, "I'm going to record a podcast." And they were like, "Hey, Dostcast." And I was like, "Yes, exactly that." Yeah. Like if I wouldn't have been sharing those casts, like that person wouldn't have known that this. That's great. You don't get paid for that. Yeah. Yeah. Thank you so much. No, but no problem. But what I'm asking is this now? Let's talk about something else. Just say trust. You know, there are so many examples of managers conning artists. This is the one I can think of is
एल्विस प्रेस्ली का मैनेजर हुआ करता था कर्नल सैंडर्स के नाम से, एंड इन द लेटर पार्ट दैट्स ओके, एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर व्हाट हैपेंड इज ही मेड प्रेस्ली prisoner. He wouldn't let him go out. वही उसकी ज़िंदगी कंट्रोल करता था, and it became very toxic. And I understand, I'm not saying कि यार प्रेरणा तू ऐसे करती है, but नहीं, मैं शायद करती भी होंगी पर मुझे नहीं पता. But like how do you get someone to trust you? यार अब ये तो कैसे बताऊँ मैं. नहीं मतलब in the sense कि यार आई थिंक ना थोड़ा यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली किसी को मैनेज नहीं कर रही थी यार, मैं एक कंपनी के थ्रू लोगों को मैनेज कर रही थी, तो लोग उस कंपनी को ट्रस्ट करते थे यार. OML 15 साल से इस बिजनेस में है. Really? या मेरे को तो ऐसा लगता है कि OML तभी आई है जब से कॉमेडियंस ने अपने उस पर लिखना शुरू कर दिया है contact@oml.in. यार पता है सबसे वो जोक था कि सबके बायो में होता था कि कॉन्टैक्ट लाइक फॉर इंक्वायरीज prerna@oml.in. There was a time where most artists had that and people would like literally call me, hey, you're prerna@oml.in, right? And I'm like, yeah, I'm that person. And now मेहताब का नाम है. I'm very glad कि मेहताब का नाम है. किसके बायो में देखा तुमने? I think Rahul Dua. I saw it in Rahul Dua's bio. Yeah. Very weird. नहीं, पर OML उससे पहले भी था ना. OML started off with music management. वो लोग musicians को manage करते थे. And there was one point of time, I think in 2017, where they fired all the musicians and they were like, we'll just concentrate on comedy. But you were around for the wave when comedians were really rising up. I think when I got into comedy in 2015, it was just started to boom then, and I think 17-18 it was at its peak where Zakir today also can sell stadiums. But मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कभी किसी ने देखा था कि स्टेडियम में स्टैंड अप कॉमेडी शो हो सकता है, and Zakir did that. So that's a very proud moment for Indian comedy scene, I would say. Last night you were having a discussion, you were saying you feel bad that comedians now have to make reels. Yes, I really do. And I would say stand-up comedians, not just comedians, because comedy can be done in a lot of different forms. But when it comes to stand-up comedy, the art form is such कि मैं कुछ बोलूँगी and there will be a live audience sitting in front of me और मुझे immediate validation मिलेगा, immediate feedback मिलेगा. That's which is what performers want. हाँ, yeah, exactly, right. And right now that is, and because of the pandemic, I feel like ये और भी ज़्यादा exaggerate हो गया कि तुम्हें अगर अपना content का feedback चाहिए तो तुम्हें उसे literally record करके Instagram पे डालना पड़ेगा. And तुम्हें feedback मिल रहा है likes से या comments से. तो मुझे लगता है इस करके मुझे बुरा लगता है कि at least stand up as an art form is not like something that can be done on reels. That's true. Yeah, I mean, like the other day I was trying to figure Prakhar and I were having a conversation. I was like, he should do an open mic in Bombay. And I was trying to figure that where are open mics happening in Mumbai. And I was surprised to see that there aren't that many venues where like a new person can go and sign up and be but like, Delhi में तो है. Summer House Cafe always has those on Tuesdays. पर Bombay में नहीं है. Like मैंने because of the influx of comedians that they just stopped. I really don't know. I don't know if it's because of the pandemic. Yeah. कि अभी open mic करना is not, पहले भी फ्रूटाइल तो कभी भी नहीं था यार, पैसे तो बनते नहीं थे. मतलब वेन्यू आई थिंक दया ही कर रहा था कॉमेडियंस पे आके परफॉर्म कर लो, शायद ऑडियंस मिल जाएगी तुम्हें. पर अब तो वो तो उतना भी नहीं है. मतलब लाइक पहले एटलीस्ट जब CLC था तो every Monday there was an open mic where 15 people would go on stage for the first time. Yeah, probably for the first time. There are a bunch of comedians जिनको first, like मैं जब CLC में थी तो मेरा responsibility था to fill up that lineup. Right. So there are a bunch of comedians जिनको first literally open mic का spot मैंने दिया था. So right now, because of that dedicated comedy club not being there and the other clubs that are there like your Habitat or that comedy club, they're not doing regular open mics. तो अगर एक नया stand-up comedian है आज की डेट में, वो अपना material कैसे ट्राई करे, कहाँ ट्राई करे? And I felt really bad कि I'm like, क्यों नहीं हो रहे open mics? One thing I saw at the only open mic that I mentioned on this podcast a gazillion times is Arpit Bala, इसका content तूने भी देखा हुआ है. हाँ, काफी funny on reels. Stand-up it was very interesting to see him try out that same humor. ऐसे accent में बात कर रहा है and it worked. But I'm just saying कि a non-Instagram native reels audience would not take to it kindly, right? When you not necessarily, right? Till you not do it enough times in front of enough audiences, you wouldn't know whether it's working or not working. That's what stand-up is, right? मेरे दिमाग में ये joke बहुत funny है. पर जब मैं ये एक माइक में 4 लोगों के सामने बोलूँ और सन्नाटा छा रहा है, मतलब नहीं है. मतलब आई हैव टू टेक दिस जोक बैक
and figure what is not working. Is it the way I'm saying it's not working? Do I need to add 10 more words? Do I need to remove the 10 words from the joke and make it more concise? And that only happens when you go on stage again and again and again, and then one fine day, hopefully, you'll crack it. And then you keep repeating that, and that's what stand-up is. What do you miss about being a manager? I really miss collaborating with artists. इस करके तो मैं इंस्टाग्राम पे दूसरे आर्टिस्ट के साथ बात करके अपने मैनेजमेंट की ऐसे जो भी मेरी इच्छाएं हैं पूरी कर लेती हूँ. But that is something that I truly miss, like collaborating with people. And now also I do collaborate, but it's very different. The dynamic is very different. It's not a collaboration of equals anymore. Whereas I felt like that when I was a manager, it was a collaboration of equals. Now it's just like you're helping someone out basically. No, now it's like कि मैं client हूँ. Oh right, तो because you're the other side. वो डायनामिक बहुत डिफरेंट है. कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ और जो भी मेरा प्रोड्यूसर राइटर या जो भी है वो मेरे को ये नहीं बोल सकते कि चुप करते जो बात है वो सही नहीं है तेरी, you know. पर लेकिन जब मैं मेरे आर्टिस्ट के साथ में काम करती थी तो अगर मैं कुछ जो whatever that I'm saying is not making sense, they would tell me that Prerna, this is not making sense. Right now that dynamic is not there, right? क्योंकि तुम client हो, तुम हमेशा थोड़े ऊपर हो. एटलीस्ट मेरे मुंह पे तो नहीं बोलेंगे. Did artists tell you, please मेरे पास ना time नहीं मिल रहा है, can you help me make some time in their schedules? Would you do that as well? No, that is something that I never did. I wasn't their PA, right? I didn't manage their schedules. I managed their career. But wouldn't you say like when people go to manage, वो roles सारे blend हो जाते हैं एक साथ? How did you establish personal boundaries? That's what you have to establish boundaries with your artist. And I would tell, literally, I've had this conversation with my artist कि like देख तेरी फ्लाइट बुक करूँगी और मैं तेरा बोर्डिंग पास करूँगी या ये वो करूँगी तो मुझे आधा घंटा दिन का जाएगा. डू यू वॉन्ट मी टू स्पेंड हाफ एन आवर डूइंग दैट और एक्चुअली स्पेंडिंग दैट हाफ एन आवर थिंकिंग अबाउट हाउ टू मेक यू अ बेटर आर्टिस्ट और हाउ टू मेक यू ग्रो इन योर करियर? व्हाट डू यू चूज? एंड ऑब्वियसली फॉर देम इट वाज लाइक नो, योर ब्रेन शुड बी देयर एंड नॉट देयर. एंड इट वाज क्लियर, राइट? लाइक कि तुम्हें PA चाहिए तो मैं इंटर्न ढूंढ लूँगी 5,000 रुपये महीने में जो तुम्हारी फ्लाइट बुकिंग्स करेगा, जो तुम्हारे लिए तुम्हारा स्केड्यूल हैंडल करेगा. मैं वो काम नहीं करने वाला. So you would like you would consult them कि मैं तुम करियर में भी ये कर सकते हो. Like would you make a plan for someone? Yes, yeah, we would make business plans for them कि how we as OML what we think they should be doing also. Right. Yeah, we used to do that. अभी I don't know वो हो रहा है कि नहीं. अच्छा. पर हम तो करते थे. Now in your other job, a place where you work at, which we cannot disclose, I see that your Instagram a lot. Does this because you have to consume a lot to know कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? Does it drive you wild just consuming so much? Not really, because I enjoy it also. So like yesterday actually when I went back home I was thinking with you guys I had a conversation and both you and Azim asked me कि what do you do in your free time? And I had no answer. Because all I do in my free time is watch content and consume like either Instagram or watch a movie or do any of that. So I know that helps me do my job better also. So technically I don't switch off. Ever? Yeah. And then I felt a little sad. I was just like नहीं यार switch off तो कर लेना चाहिए थोड़ा कभी कभी. Yeah, I think the opposite of that is either creating content or some kind of meditation. Because I don't think because for me as someone who creates I get अगर मैं बहुत ज़्यादा consume करता हूँ मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है. I start feeling mentally drained and stupid. मेरा दिमाग तो थोड़ा खराब हो गया मुझे लगता है. I'm sure हो जाता होगा यार क्योंकि like you're in all these realities where people are creating like you watch this podcast, right? Like so it's weird, no? Like I would feel weird listening to myself for like 1.5 hours, 2 hours, but you have some people have amazing creator endurance, you just have amazing consumption endurance, which is weird. Yeah, but in a way that also helps me do my job better, right? To know what are the trends that's happening, what is it that people are liking, वो सब चीज़ें भी तो important है. But I get मुझे थोड़ा meditation life में कर लेना चाहिए. As of December 18, 2021, what do you think is something that most comedians are sleeping on that's like very valuable? Like a trend that they're not hopping on, something they're not doing well. Honestly, I feel like that comedy is so personal that trends पे hop on करके कुछ नहीं होगा. Like it's not like a YouTube video. Yeah, it is like the end of the day तुम्हारा personality है जो तुम लोगों को बेच रहे हो, right? As a comedian, either a stand-up comedian or like a content creator, right? People are attracted to the person that you are, that is why they're consuming their content. तो trends से maybe तुम्हें वो time पे views मिल जाएंगे, likes मिल जाएंगे, but लोग अगर तुम्हें fans बनाने हैं तो तुम्हें अपना personality बेचना पड़ेगा. So मुझे नहीं लगता कि trends
पर से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. I see. Nothing at all, like nothing, because you said I should get Masti Rajput on this podcast. I mean, I tried. I think he's trolled so much by people that he was like con, and then he stopped responding. But you know, why did you say that? Because I was getting people like Puneet and Raja on, so it was just like I felt like that. I think I was a little selfish there. I wanted to just like listen Watch, to him. Yeah, Masti Rajput, yeah. Masti भाई अगर आप देख रहे हो please मतलब मैं आपको आप करके बात कर रहा हूँ, हालांकि तुम उम्र में से छोटे हो बट फिर भी मतलब उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है जानना था मुझे कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा सुनने में. Like what is it like to be with Khali all day? Yeah, and film his shit. Exactly. And what's going on in your head, right? Like, are you how are you convincing Khali to do shit, right? Or is it Khali convincing you? We don't know. So it's very Khali ने जो WWE में सीखा कि जो स्टोरी लाइन चल रही होती है ना झूठ बोलने वाली, he was Punjabi playboy at some point. He's done a really bad but good job of like making the same thing happen with CWE, जहाँ पे उसके wrestlers आपस में छोटी छोटी स्टोरी लाइन्स प्ले आउट करते रहते हैं. जैसे एक लड़की है, वो हमेशा ही वो पहन के रखती है गर्दन पे, क्या बोलते हैं उसे, जो चोट लग जाती है गर्दन में तो वो पहन के नहीं रखते. क्या नेक ब्रेस, व्हाट डू यू कॉल इट? या मे बी अ नेक ब्रेस. यस जो स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस वाले पहन के रखते ताकि गर्दन सेपरेट रहे ऐसे. तो वो पहन के रखती है, ठीक है. उसको जाके कोई रेसलर मारता है पीछे से, फिर खान नाम का रेसलर आता है, वो उसे मारता है और फिर तूने मेरे लिए ऐसे करा, वो सब फेक हो रहा होता है. बट इट्स सो ग्रेट एंड ही इज रियली क्रैक्ड कंटेंट. लाइक थिंक अबाउट इट. हमें बचपन में लगा कि वाओ खली आया है, वो इंडियन रेसलर. एक दो मैचेस देखे, वी सॉ नो पर्सनालिटी, सो वी ट्यून ऑफ आफ्टर अ व्हाइल, राइट? लाइक ओके, सम जायंट, स्ट्रॉन्ग बट ग्रेट, और हमें नहीं जानना. देन many years pass, nothing happens. Khali starts posting reels and people, some meme kids are like, yeah, ye badhiya hai. He rises to national fame like nothing else. Where Khali is back as being a celebrity, a chief guest, you know, brands उससे ads करा रहे हैं, unironically कर रहा है. Ironically नहीं, unironically कर रहा है. I think he's playing Sabu in Oh really? Yeah, I saw an Instagram post where he was playing Sabu for something. मतलब वो पोशाक तो वैसी वाली थी, साबू वाली. But like, was it a one-off thing or is he actually playing Sabu? I would love if Khali played Sabu, but he would have to shave off his wonderful long head. Head नहीं कह रहा, sorry, hair. नहीं, पर ठीक है यार, ये वाला साबू के पास बाल है. Things are changing. Why not? Yeah, there was another ad that I think वो ऐसा वाला ad, a personalized ad, you won't see it anywhere else, where he is with this guy who is a dwarf. और ये दोनों पार्क में बैठ के चटाई पे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ वो पी रहे हैं, और कुछ बच्चे बुली करने जाते हैं खली को. तो खली इज शोन एज द जेंटल शाय जायंट जो बुली हो जाता है, और फिर वो ड्वार्फ आके उसे डिफेंड करता है कि खली ऐसे कैसे होने दिया तूने, मैं तेरे को बताता हूँ. आई वाज लाइक क्रेजी, like just imagine being called to something because you're tall. You know, too funny. yeah so he I love Khali, but he's a content anomaly. Like you were not expecting that at all. Just the same way Puneet is. Yeah. Or the same way, for example. Yeah, I actually want to know what are the kind of people that are consuming Puneet or Khali's content. Like, because हम मतलब मैं तो ironically consume करती हूँ. Most people are doing it ironically. Is it? I feel like that there is, because it's India that we live in and there are so many different people. I feel like there are, like, I think most of the people actually are, there are not two Indias. I think there are many Indias. नहीं मतलब two in the sense कि वो जो दूसरे तरह के लोग हैं ना, वो है कि यार हमने खली भाई को देखा था, हमारा इंडियन जा रहा है, हम खली भाई से प्यार करते हैं, तो खली भाई लव यू भाई, you know. And same with Puneet. Like Puneet, like there's this whole, because they see him as one of his own, of their own, who made it. Yeah, you think for them like Puneet is aspirational? Absolutely. For other TikTokers, till the time Puneet went on to MX Chakatak player or TikTok, they were aspirational for Puneet. Yeah. चाहे उसने गाली दी कि यार वो क्या करते रहते हैं, like there was a part of him that knew कि this is my road to fame. Like you cannot, a Puneet superstar cannot become Shah Rukh Khan. Like वो नहीं कर सकता. So weirdly enough, when you sit here and do this, I'm sure like there are people that look up to you. They're like, ये. When I did this, like a couple of young Gujar guys really started to me कि आप बहुत सही कर रहे हो. It's very weird. Like it's so मतलब we do this out of ironically देखते हैं, and then eventually what happens is people start rooting for you. Irony breaks.
Because if you're persistent, irony टूट जाती है. Yeah. Now you're really rooting for Puneet and Khali. Now you want them to win. I'm just like, I want to cast Puneet in something that I'm making. I will connect you guys. You should. He's great. I have been on a video call with Puneet. Really? Yeah, tell me your experience. कैसा रहा? पुनीत भाई, आओ तो बड़े शुभ पुनीत भाई, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, पर so there's bunch of internet friends again. There was a time जब second lockdown में कोई कुछ नहीं कर रहा था, तो हम नए दोस्त बना लिया हमने. तो one of the guys, he was just like, guys आज 7 बजे ready हो जाओ. And I'm just like, 7 बजे हम क्या करें? He's like, oh my god, I'm very excited. I'm like, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? He's like, हम पुनीत के साथ में video call करने वाले हैं. And then everybody was excited. So the bunch of people on an Instagram were like, oh, we need to do this. Right. And then we were on a video call with Puneet for an hour where he was shitting on us, doing this only. अरे कोठे बंगले वाले, like him. 1 घंटे के लिए. 1 घंटे के लिए. We were on that call with him and it was just hilarious. It was amazing. It was Puneet being Puneet for an hour. And yeah, it was just like, it was fucking amazing. कि मतलब जैसे आपकी नाक ऐसी लगती है या आपके बाल ऐसे लगते हैं या आपने ड्रेस ऐसी पहनी है ये सब. या वैसे ही बस वही चीज़ है. 1 घंटे के लिए वो यही कर रहा था नॉन स्टॉप. That's crazy. It really was. I bet like this is something your friend decided or plan करा था कि हम ये कर पाएं. Like an evening with Puneet Superstar. Yeah, and it was like, it wasn't कि all of us were like, अरे अब इसने बोला है तो हम ये करें. हम नहीं, हम genuinely excited. But you were on to Puneet Superstar like second lockdown, that was a while ago. No, I mean second lockdown में I made these friends. This video call with Puneet happened I think sometime in August, I want to say. September. August of this year. August. Yeah. Second lockdown was not that long time ago. It was April, May this year only. Yeah, it just feels like 6 months. It just feels like a lifetime. Yeah, it feels like a lifetime. I feel like we've grown older ever since the second lockdown. I too have, I think. Yeah, for sure. Me as well. I'm turning 25 this January. So young. Yeah, very young. Yeah. Talking about podcasts, like, shit, bro. Like, do you listen to other podcasts? Like, not really. I've never been a podcast consumer per se. I think dedicatedly I listen to Dostcast now. Yeah. मैंने पहले जो पॉडकास्ट सुने वो हमारे कॉमेडियन लोग के 2 Past 2 Curious जिसके 4 एपिसोड बनाए बिस्वा और केवी ने, और उसके बाद में बोला हम ये नहीं करेंगे. But they're so smart. They are amazing. Biswa and KV are so goddamn smart. Some of the smartest comedians I have had the chance to witness. And like not like smart as in like witty smart. Like nerdy, geeky smart. Like intelligent people. I feel like each time I spend an hour with KV, I learn something new. That's how it is. And I really look forward to like just chilling with him. Because मुझे पता है कि मैं कुछ तो नया सीखूंगी इनसे. Same with Biswa. Like it's the same. It's like such intelligent conversations happening around you all the time. Yeah. ऐसा नहीं कि वो लोग बकचोदी नहीं करते हैं, पर उसमें भी इतना इंटेलिजेंस है यार. वो लोग आपस में जोक्स इंटेलिजेंट मार लेते हैं. लाइक साइंस के बारे में जस्ट लाइक मेरे को समझ नहीं आया पर लगता है फनी है. Yeah, if you can see conviction and passion in someone's jokes, you laugh because you're like हाँ इनको मजे आ रहे हैं. तो I'm sure like it comes from a genuine place. नहीं मतलब बेसिकली पता है कि ये क्या है, बट लाइक I mean because again joke wise के I don't know that what is it about that it's funny, but I know that it's funny. Yeah. You know, it's one of. Have you watched Biswa Kalyan Rath's mockumentaries? Mockumentaries? You can ask Biswa if he's friends with you. He used to, इसके YouTube channel पे still होंगे. उसने mimic करी Morgan Freeman की आवाज़, and he cut together a bunch of videos. Really? Yeah. Wow. How have I not seen this? है ना? You also did not know what Kaviraj Singh was also an upcoming comedian, bro. Yeah. I should do your job. Yeah, now I'm very far from comedy, yaar. Like literally, it's been more than a year and a half since I left the comedy industry, so I am a little far. But yeah, Biswa ka documentaries, I mean, amazing. It's so वो concept पूरा यही था. He would talk. I think he would talk about some science fiction-y concepts and some general reality की बात है, but in a very funny way. I think it was his attempt at like doing YouTube humor. Oh. And at a long time ago. This is like 2012, 13, I would say. That early on? Or 14 even, like when I watched this. Biswa Kalyan ki After Pretentious movie reviews or before? After. There was a whole time when Pretentious movie reviews shut down and they were not doing anything. This is copyright strike आते थे उस पे. Oh, because of the movies? Yeah. Wow. I had no idea. No one ever told me about that. कि ये ऐसा, because this is a very real phenomenon on YouTube. ये हो जाता है. And that was funny as fuck. यार मैं अभी भी मुझे बोर होता है तो मैं जाके पुराने एपिसोड देख लेती हूँ. किसी ने तो डाउनलोड करके ऐसा अपलोड किया हुआ है. थोड़े बहुत कनन के चैनल पे अभी भी हैं, पर कुछ बहुत अच्छे एपिसोड्स जो उनको प्रेमगन is a genius one. Oh yeah.
I think all of them are really funny. So मैं randomly when I'm bored, I just go back to this old content and watch it again. Yeah. Just like Biswa and Kanan at their youngest peak. दोनों ऐसे छोटू बच्चे. But there was also time in India when only English comedy reigned supreme. I'm so glad that, you know... Because at that point of time, internet access was so limited to the people who were privileged and in the cities. That's why English comedy was booming. Like YouTube पे पुराने अगर तुम स्टैंड अप वीडियोस देखो तो वो पैसे वाले लोग जिनके पास है अनलिमिटेड डेटा या मे बी लिमिटेड डेटा पर उसके खरीदने के पैसे वो लोग कंज्यूम करते थे. अब बिकॉज ऑफ जियो एंड एवरीथिंग इंटरनेट हैज बिकम अ लॉट मोर एक्सेसिबल टू पीपल. दैट इज व्हेन द होल हिंदी फेम स्टार्टेड कमिंग. First with Zakir, no? First with Zakir, who made it mainstream. Yeah, I think so. Zakir 2016 I think is when he put out his stand up first, if I'm not wrong. Yeah. Like उसके बाद में उपमन्यु, बस्सी is just The trifecta, like these are the three biggest comedians in the country. Yeah, I think so. I think so. Zakir, उपमन्यु, बस्सी है. Dostcast back to back. Same shirt के अंदर अभी क्षितिज के साथ करा था. Yeah. काले कपड़े. यूनिफॉर्म बना ले अपने दोस्त का. है ना, करना ही पड़ेगा मेरे को. मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए. क्यों? माइक पास कर ले थोड़ा सा. हाँ, अच्छा रहेगा. नहीं, it's just great. It's just great to have one, so you don't have to think about it all the time. Yeah. There's this guy called Andrew Huberman जो वो बहुत अच्छा साइंस पॉडकास्ट रन करता है. He just wears all black. मेरे उस कपड़े नहीं थे. Realized I was so stupid. मेरे जो सारे अच्छे कपड़े थे वो धुलने चले गए. मुंबई में सारी शर्टें ले आया. मैं जो कि कहाँ पहनूंगा शर्टें. तो and I should have brought like regular shoes. I bought boots instead. So I just go everywhere with boots. These boots are looking nice. Thank you. Thank you. But this मेरे is पास भी same. The same boots? Yes. Yeah. मतलब same looking. You know, I had no idea. So if you wear boots at the airport. Yeah. They ask you to remove them? No. They do a special check. Of the boots? Of the boot. क्योंकि I was at IGI and like, sir, आपके boot हैं. और मैं हमसे नमस्कार जी, क्या हाल है? ऐसे तो बात करते हुए जाता हूँ, मक्खन लगाते हुए. तो वो कहते हैं कि सर एक मिनट ज़रा जूते ऊपर कर लो ऐसे. और उन्होंने स्पेसिफिकली जूतों को स्कैन करा. यू नो, बिकॉज़ आई मीन इट्स अ ग्रेट प्लेस टू शो ड्रग्स. मेरी शक्ल ऐसी क्यों है? मैंने आई वाज आल्सो आई थिंक इन हाइंडसाइट आई थिंक आई एम ऑलवेज ड्रेस्ड एट एयरपोर्ट्स इन पजामास एंड स्टफ एंड आई लुक शेडी. मैंने लिटरली फॉर 2 years ऑफ माई लाइफ सिर्फ नाइट सूट में फ्लाइट्स लिए हैं. माय गॉड. लिटरली. क्योंकि हम जब मैं आर्टिस्ट के साथ में काम करती थी तो हम टूर मैनेज भी करती थी मैं उनको. ओह, यू वेंट ऑन टूर्स? यस. तो हम फ्राइडे. हाउ एक्साइटिंग और नॉट? ये माइक गिर रहा है क्या? क्या हो रहा है? हाँ, SF58. ये दिस इज द माइक ऑफ द प्रोफेशनल्स, स्टूडियो म्यूजिशियंस, कॉमेडियंस, सब अपने. So but what they do is they do the stupid thing which they should not. They reveal माइक कितना घटिया देखने में. Which is something you should never do. मजा ही कुछ और है. पर साउंड कितना बेटर आ रहा है. क्या? With this off? Yes. I have been running 57 Dostcast episodes all wrong, my friends. So okay, we'll just take these off. No protection. No, actually what we can do is I'll do it with this, you do it without, and then we'll compare the sound कि किसका sound better है. बहुत बढ़िया. हम इसको बोलते हैं producer. Yeah, that's what blind sides of comedians do you often feel? क्योंकि everyone has blind sides, right? हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत फनी है लाइफ में लेकिन नहीं होते. तो मेरा काम होता है कि भाई तू फनी नहीं है. ये बोलना. हाँ. और they don't take it well, or do they? मैं बोलती थी तो सुन लेते थे. मेरे को पता नहीं क्यों मेरी सुनते थे यार इतनी. पर मेरी ओपिनियन की वैल्यू हमेशा से रही है इन लाइफ. तो आई थिंक या तो मैं बहुत कन्विंसिंगली बात करती हूँ या मैं अच्छी बातें करती हूँ. तो वो पता नहीं मुझे. बट आई वाज टेलिंग यू दैट आई यूज्ड टू प्रोड्यूस अ पॉडकास्ट वरुण ठाकुर के चैनल पे. इंटरनेट सेड सो. यस. Why does it need a producer? Because it's all on Zoom. अभी Zoom पे है ना. जब ऑन ग्राउंड मतलब कोविड की वजह से Zoom पे हो गया. जब हम ऑन ग्राउंड करते थे तब यार you just go on YouTube and type my name and you'll see a bunch of videos and you'll be like कि प्रेरणा का नाम पे ये videos क्यों आ रहा है. And then just go and see the credits. वहाँ पे special thanks प्रेरणा लिखा होगा. Really? Yeah. Varun Thakur is funny. Yes, he is. And you produce this and? नहीं, just I just produced it for a bit. Why? अच्छा ये चीज़ भी है ना. Till I left my job, I think I used to produce. Why? I see this a lot. Bhai, this sound is way better. I feel so bad for myself. Thank you. Thank you, Prerna.
ऐसे ही होता है ना, you find See, अब ये मैंने तेरे को सिर्फ बोला अच्छा साउंड अच्छा लग रहा है, तूने सुन ली मेरी बात और ट्राई किया और अच्छा लगा, राइट? सो you just show proof of work. छोटी छोटी चीजों के अंदर. हाँ. अब कल मैं कुछ और बोलूंगी कि ये लाइट मादर चौथ है, इसकी जगह पे येलो लाइट होनी चाहिए थी, तो तू शिट मैंने मादर चौथ. कोई बात नहीं, it's okay. We let it. If you don't want to use abuses as a person. नहीं मेरे को चलेगा, पर तेरे पॉडकास्ट पे मेरे तूने सुना नहीं तो हम तो बहुत गाली देते हैं, मैं देते ही रहते हैं, अभी दे दी सिर्फ दिखाने के लिए. Anyway, यार आजकल क्या हो रहा है, मतलब कॉमेडियंस स्टैंड अप भी कर रहे हैं और पॉडकास्ट भी कर रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द इंटेंट? बिकॉज आई विल से दिस फ्लैट आउट, आई थिंक मोस्ट पॉडकास्ट आर टोन डेफ. मतलब वो कहीं हवा में ही बात किसी और के लिए बात कर रहे हैं. I think but I feel like again you have to put your personality out there, and तुम अगर as a stand up comedian तुम कितना ही स्टैंड अप वीडियोस निकाल सकोगे, राइट? क्योंकि तुम्हें पहले नया मटेरियल लिखना, उसे वर्कशॉप करना, उसे पूरा मिल्क करना इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस, उसके बाद जाके रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना. एंड देन यू डोंट डू इट अगेन, राइट? वंस एग्जैक्टली, या हाँ, अगर तुमने एक बार तुमने मटेरियल अगर डाल दिया यूट्यूब पे, तो वो मटेरियल तुमने रिटायर कर दिया. रियली? या क्योंकि तुम फिर जो लोगों ने सुने हुए हैं वो जोक्स तुम फिर से क्यों परफॉर्म करोगे इन फ्रंट ऑफ पीपल? माय गॉड. या तो तू सोच कितनी मेहनत जाती है उसमें. मोस्टली तुम नया बिट लिख के वर्कशॉप करोगे तो मुझे लगता है कि कम से कम तुम्हें लाइक कुछ लोगों के लिए शायद जल्दी होगा, कुछ पर मुझे लगता है 3 से 4 महीना मे बी टू जस्ट गेट दैट जोक राइट, तुम्हें उतना टाइम लग जाता है, समटाइम्स इवन मोर. फिर वो करोगे, फिर तुम उसके बाद कम से कम उस एक जोक को 1-1.5 साल तो इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस करना चाहोगे, तुम उसे टूर करना चाहोगे, तुम अलग अलग सिटीज में जाना चाहोगे. एक जोक को 2 साल टूर करना? यस, दैट्स क्रेजी. कितने लोग हैं, और वो लाइव शो में तू एक शो करेगा जिसमें तेरे 300-500 जन आएंगे या 1000 जन आएंगे एट मैक्स, अगर तू 1000 टिकटें बेच सकता है तो. राइट. तो और तू ये सिर्फ बॉम्बे में कर रहा है, तुझे दिल्ली में करना है, तुझे अहमदाबाद में करना है, तुझे गुड़गांव में करना है, फकिंग तुझे आई डोंट नो पूरे इंडिया में, आइजवाल में करना है, इम्फाल में करना है. इम्फाल में पता नहीं लोग कॉमेडी देख रहे हैं कि नहीं, बट आई एम गेसिंग देख रहे होंगे. इम्फाल गाइस से हेट फॉर प्रेरणा इन द कमेंट्स. एनीवे, या. But yeah, so you would want to perform, and now internationally also, right? If there are some comedians who have like Indian diaspora people wanting to watch. डायस्पोरा वाले तो मर्जी, हमें प्लीज थोड़ा साथ दो, हमें तो इज्जत ही नहीं मिल रही इस देश के अंदर. उपन्यू अभी गया हुआ है ना परफॉर्म करने अमेरिका में. हाँ, he had a tour that was cancelled due to COVID. He was in the States. Him and Atul Khatri, both of them were in the States, and then ये whatever lockdowns होने लगे, and then they came back. That's crazy. Yeah. Imagine being an Indian comedian stuck in the States with no other comedian to make jokes from. Eventually ये होगा, यार ये गोरे ऐसे नहीं करने दे रहे, वैसे नहीं करने दे रहे. नहीं, मेरे को लगता है शायद गोरे ज़्यादा accommodating होंगे. किस चीज़ को लेके? For the art form, I feel like इंडिया में still थोड़ा stand up लोगों को पता ही नहीं है कि stand up हाँ, अभी नहीं पता, अभी नहीं पता. जैसे like तुझे नहीं पता था कि एक बार अगर इंटरनेट पे जोक डाल दिया तो फिर वो कोई वापस नहीं परफॉर्म करता, राइट? तो वो नहीं पता लोगों को. बट लाइक मेरे को अनस ने बताया था लास्ट टाइम व्हेन ही वाज ऑन दोस्तकास्ट, इज लाइक पहले स्किट वाला कल्चर था, यू नो, लाइक ऑफ द मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग, दैट इवनिंग को चुटकुले भी सुनाने आ रहा है. And this really started emerging with a couple of clubs opening up in Delhi and Mumbai primarily, right? Where these were the two hubs of comedy in India. Yeah, Delhi में तो बहुत बाद में. I think first. I said it was Mumbai first. Yeah, I think 2009-10 is what I want to say, when the Laugh Store, I think it was called. So whatever comedy store. इसको हटा ही ले, आवाज़ बहुत अच्छी हो जाएगी. मेरी आवाज़ वैसे भी बहुत अच्छी है. हाँ, मतलब और अच्छी हो जाएगी. Just try that. Hello. Yeah, it's just better. है ना? Yeah, I know. पता है, मेरे को पता नहीं था. So it already has a pop filter inside. I did not know that. Yeah. I feel very stupid. It's just that I did not know this would get exposed like this. क्योंकि जब मैं अपने वहाँ पे करता हूँ ना स्टूडियो में, it never dawns on me, and I was like, I don't want this aesthetic because it shows that we are not prepared. No, but this is a really good mic. No, it's a good mic, but like this is very aesthetically. No. When I say this, listeners, I mean the gray, the silver. Top of the mic, for the lack of a better word. No, I think it looks better than this black thing. Really? Yeah, ये मुझे एक तो तेरे पॉडकास्ट में यार आधा टाइम ये टोपा ना सीधा नहीं होता, मुझे अंदर से थोड़ा सा ऐसे सिल्वर दिख रहा होता है, मुझे इतना OCD होता है ना, होता है. मतलब ये क्यों है यार, कवर तो सीधा लगा ले भाई. क्या मेरा मोमेंट है, देखो हम तो लिसनर को बुला लेते हैं, किससे सी लिसनर को आता है, email us at dostcast@gmail.com. I'm just kidding. What has also happened in this podcast, I do want to mention this. भैया मैं 15 साल का हूँ, मेरे से कंटेंट निचड़वा सकते हो तो निचड़वा दो, मेरे को प्लीज पॉडकास्ट में बुला लो. क्या वी विल टॉक अबाउट द एवरेज लाइफ ऑफ 15-year-old. मैंने कहा नहीं, अच्छा ठीक है, अगर मन करे तो कर देना. बट
I really want to know what is the average life of what is the life of an average 15-year-old today? Because You want to know why are you validating something? क्योंकि मैं 15 साल पहले 15 साल की थी, अब मुझे जानना है. You're right. मैं हूँ थोड़ी पुरानी. No, one thing that is happening is a lot of kids hang out on Discord. Like we used to hang out. I got onto Discord in the second lock. मुझे लगता है second lockdown में ना मैं ऐसा टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गई लाइफ में. मैं ये बच्चों के साथ मतलब whatever, मैं इंटरनेट फ्रेंड्स, बच्चे नहीं बोलते उन्हें, लोग गलत सोचेंगे. मतलब these young people, I would want to say, because of them I got onto Discord और मुझे कुछ समझ नहीं आया. It's a very messy interface. It took me a while to get. अभी भी मेरे को मेरे mods है जो करते हैं, मैं सिर्फ वहाँ जाके भाषण देता हूँ जब देना होता है. But that's it. But it's weird, no? हम 15 साल के एज पे, like you're slightly older than me, like but still like going out to play, है ना, खेलना जाके, मिलना लोगों से, कुछ खाने जाना. हाँ, आज के बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे एक्चुअली नहीं पता, मुझे जानना है. Fuck you, just. क्या पूरा दिन तुम एक्चुअली PUBG खेलते हो? Like. But I will have to. Okay, then I'll have to have like a bunch of people. Like 15 साल के 4 बच्चे बिठाऊंगा Dostcast पे. You know, there's this very nice video that Hasan Minhaj had done. I'm not sure if you watched it, where he was talking to a bunch of young kids for his what was that Netflix show that he used to do? Whatever that, I'm forgetting. जिसमें वो हर हफ्ते आके एक बात बोलता था कि दुनिया में ये बुरा हो रहा है. हाँ. Do little comedy, just information, yeah. Yes, whatever that was. So उसके लिए एक segment उसने किया था where he's talking to desi kids, desi younger whatever kids, and it was just a fun thing कि how and obviously it felt a little scripted but not a lot, but वो बच्चों की personality भी खुद shine कर रही थी, but it was very good to know कि क्या कर रहे हैं आज के बच्चे यार. Like it's really funny. There was my cousin, she's like I think 9 or 10, I think 4th 5th standard में होगी इंटरनेशनल स्कूल की. तो वो अमेरिका में पली बड़ी है एंड अब लास्ट 3-4 साल से वो लोग इंडिया में हैं. एंड शी डिडंट हैव अ सेल फोन. दिस इज 1-2 साल पुरानी बात है. एंड तभी वो उसके पास iPod था और वो iMessage पे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती थी. Right. एंड वी वर इन अ कार राइड एंड शी वाज जस्ट लाइक, oh my god, I'm blocking her. And I was just like, what? She's like, yeah, she's irritating me. She's asking me too many questions. So I'm blocking her. And I'm like, you're a 9-year-old. Why are you blocking your friends? And her father told me, Prerna, it's her life. If she wants to, she can. She can choose who she doesn't want to talk to. And I'm like, this is a 9-year-old child. मैं जब 9 साल की थी, मुझे कोई बच्चा पसंद नहीं आता तो मैं उसको धक्का मारती थी और घर पे भाग के आ जाती थी कि मैं तेरे से बात नहीं करूँगी. Imagine like people, like a 9-year-old child knows what it is to block someone. Like why would you want to do that? Like तुम दोस्त हो ना, एंड ऑफ द डे बात करके डिस्कस कर लो, व्हाटएवर कर लो. लाइक बच्चे कैसे झगड़े करते हैं यार, ब्लॉक करना मतलब इट्स एक्सट्रीम नहीं है थोड़ा. इट्स अ बिट वियर्ड डिजिटल वॉरफेयर टाइप का कि मतलब तुम यू आर बेसिकली सिग्नलिंग मैं तुमसे बात नहीं कर रही, देखो हम किस तरह कितने वल्नरेबल है एक दूसरे पे, इसलिए आई एम गोना डिलीट यू फ्रॉम माय ऑनलाइन लाइफ. एग्जैक्टली राइट. And you can't see my online life until I decide. Yeah. Again. But tomorrow तुम दोनों साथ में सेम स्कूल जाने वाले हो और एक दूसरे की शक्ल देखने वाले हो. हाँ, it's weird. है ना, तो उसको फिर iMessage पे ब्लॉक करके क्या फायदा? ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं. For example, like you unfriend someone, and you remember like when unfriending someone on Facebook used to be such a task because you have finally arrived at that point where you decide कि यार ये इस इंसान के अपडेट्स देखना मेरे लिए अच्छा नहीं है या फिर हम वाकई में दोस्ती खत्म कर चुके हैं. But I feel like that those things or those decisions came to our mind when at least I was an adult. Right? Like I was whatever 18, 20 something, whatever, when I was taking these decisions that I don't want this person in my life and that is why I want to block them or I don't want to see them every day or see them on my feed. But right now, a 9-year-old who goes to school with that same person feels the need to block them. And parents encouraging this behavior, I don't know. Like मैं जब मेरे फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करती थी तो मेरी मॉम बोलती थी झगड़ा मत कर, जाओ उनके साथ ही खेलना है तेरे को, तो प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट. थूक के चाट लो. हाँ. नहीं. ये इसका पता है ना, ये एक्सप्रेशन क्या होता है स्कूल के अंदर, जैसे कि आप थूक के चाटना इज डिस्गस्टिंग थिंग. फिर बोलते हो कि मैं तेरे से लड़ाई कर रहा हूँ, फिर सॉरी यार लड़ाई नहीं करनी, तो आगे थूक के चाटना है. यार मैं बॉम्बे में स्कूल में थी तो हम ऐसा बात नहीं करते थे और प्लस मैं गर्ल्स स्कूल में थी तो हम काफी सिविल थे. अच्छा. पर हाँ, थूक वॉक इन लाइन चाटना तो मेरे लगता है मैं अभी भी शायद कभी लाइफ में नहीं बोला. जैसा कि ज़मीन पे, जैसे लिटरली इसका मतलब ये ज़मीन पे थूका ऐसे फिर चाटा उसको जाके कि गलती से थूकते हैं. लाइक जैसा कि गाली दी और वापस ले लो, गाली वापस थोड़ी जाती है. हाँ. है ना कि तू चूतिया है, अरे सॉरी मैं वापस लेता हूँ. क्या तू बोल दिया, हवा में आ गया, उसको लग गया ऑलरेडी. या बट मुझे बस ये लगता है कि कभी कभी इतने छोटे बच्चों को इतने जल्दी इंटरनेट से एक्सपोज नहीं करना चाहिए. आई एम दैट आंटी. बट या यू नो आई एम अ बिट ऑफ एन अंकल इन दैट एज वेल, क्योंकि
Like the problem is, okay, there was syndicated programming from Cartoon Network Yeah. that we used to watch. Exactly. You know? Exactly. It's syndicated programming, मतलब वो बनाई है 4-5 उस पर स्क्रिप्ट राइटर बैठे हैं, कॉमेडी बनाया. Now that's replaced by creators. I have a younger cousin who all he does is watch Beast Boy Shubh, a gaming creator, and Myth Pat. And उसको उनके सारे signature moves आते हैं. But what he's doing is I mean, obviously, when you watch cartoons, you're still viewing a funny take on reality through these, cartoons doing absurd things. Now what is happening is he's seeing these kids play games, and he's seeing the games through their eyes and their voices, उनकी commentary के through. And that's his early age reality. मैं जो कूड़ा है, at least cartoon के अंदर there's a deep wisdom as well, you know. Because some of the best writers have written Tom and Jerry, for example. Yeah. और वाइली कयोटी का जो वो शो था. आज के डेट में तो लोग बोलते हैं अरे टॉम एंड जेरी में भी तो इतना वायलेंस है, तो ये कैसे बच्चों को तुम देखने देते हो एंड ऑल. आई एम जस्ट लाइक, लेकिन वो उन्हें भी पता है बच्चों को कि ये रियल नहीं है. हाँ यार, मतलब रिमेंबर द टाइम व्हेन म्यूजिक का ओनली एक्सपोजर हमारे लिए था टीवी, और जो गाने वो हमें सुनाते थे हम वो सुनते थे. Whereas right now I think the power of choice is amazing, but it also is not great. Yeah, because it just saturates. क्या करोगे? हाँ, और तुम्हारा वर्ल्ड व्यू कितना सा हो जाता है ना, क्योंकि मैं को अभी जैसे मेरा YouTube का जो फीड है, जो 4 चीजें मैंने लाइक की हैं वो मुझे वही रेकमेंड करता है, तो मैं उतने ही बबल में जी रही हूँ. मैं नया चीज़ों के लिए एक्सपोज ही नहीं हो पा रही हूँ, राइट. वेराज अगर से टीवी पे अगर वो जो गाना बजा रहे हैं MTV पे और मुझे वही सुनना है, मैं चूज नहीं कर सकती, तो मैं शायद 4 नए आर्टिस्ट डिस्कवर कर लेती तभी. That's true. है ना? There has to be a balance now. Because हम चाह रहे हैं बहुत सारी choice, but we're incapable of handling it. Yeah. And it's a very age-old discussion. what is the something Jesus came back to earth, एक Spanish कहानी है. I think Dostoevsky ने लिखी थी. It's based in Spain. Russian author Dostoevsky ने लिखी कि Jesus comes back to the earth. He's surprised to see कि उसने लोगों को freedom of choice दी थी, लेकिन वो आज भी चर्च के पादरी के सामने bow down कर रहे हैं. उसके वो tyrannical पादरी होता है, for example, उसके वो जुल्म सह रहे हैं. Because they want food and wine, they can't handle freedom. Like हमारा freedom ले लो, but just give us food and wine. Yeah. So I think that's the same problem. Eventually, what will happen is, it's already happening with curators, right? We can't choose anymore. मेरे को अपने महीने की best 30 picks दे, मैं वही देखने वाला हूँ. You know what I mean? Exactly. Like it's also one of those कि जैसे मैं most of the time, and this is like a very famous meme or whatever where people say कि मैं content अगर मुझे 20 मिनट देखना है, मैं 19 मिनट डिसाइड करने की कोशिश करूँ कि मुझे क्या देखना चाहिए. And that is the reality. खाना खाते हुए इतना तो खाना नहीं जितनी देर वो लगता है कि यार ये देखूँ वो देखूँ, और हर किसी के अंदर 1.5 घंटे की इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट फिल्म देखूँ क्या देखूँ, यूट्यूब पे लार्ज रॉयल स्टैक की शॉर्ट फिल्म देखूँ तो कितनी घटिया सी हो, कितनी मैं तो देखूँ. आजकल दोस्तकास्ट देख लेती हूँ. Yeah. सही है. Any tips you have for growing this podcast and getting it out to a lot of people? स्पॉट पर डाल दिया मैंने, है ना? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि क्या कर सकते हैं. एक चीज़ तो मैं तेरे को बोली कि मुझे लगता है ड्यूरेशन पे शायद थोड़ा अगर काम हो, क्योंकि समटाइम्स आई सी द फटीग के 2.5 घंटे सुनना पड़ेगा. भैया, ओके. rather than me being excited about कि oh my god 2.5 घंटे सुनना है, ये सिर्फ 2.5 घंटे, वो वाला वाइब ना, लाइक 2.5 घंटे वो वाइब है. पर वो मे बी मी एज अ पर्सन कमिटमेंट 2.5 घंटे का बहुत ज्यादा. मैं किसी भी चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा, सिर्फ सुनूंगा. हाँ नहीं, हाँ तो कमेंट कर भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, तेरा पॉडकास्ट है. पर तो मुझे लगता है कि शायद वो करने से बेटर होगा. अगेन आई थिंक यू आर वेरी वेरी कंसिस्टेंट, बट यू हैव ऑल्सो लाइक आई डोंट नो, यू हैव लाइक 1,000 channels on YouTube. Yeah, everyone says that. Fuck guys. So yeah, I'm trying to really make people forget and just be on one, because I made a huge mistake and it's just what it is. कुछ कर नहीं सकते उसका. So it's just Dostcast now. Dostcast है. It's just Dostcast. अब हम किसी और पार्टी से नहीं जुड़े हुए. हमारी एक ही पार्टी है और वो है Dostcast की पार्टी. हमारा वोट वहीं जाता है. बाकी पार्टी हमारा पुराना प्रूफ ऑफ वर्क है. आप हमारी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो. Like this is the only channel then. But if I can like just ask this question, that why are you moving away from the other channels and now dedicating it to Dostcast? Because I'm growing older. At 25 you're old. Nice. No, in the sense यार I made a lot of, and I think it's great, and people responded, great educational content around teaching people writing in English. ताकि ऐसा नहीं लगे मैं शशि थरूर हूँ और मैं हाई हॉर्स पे बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ. Made it accessible. The issue is I put out so much of that for free, then I did a course and stuff. It was exhausting to repeat that again and again and again, because really after a point you can't do it week after week after week. There isn't that much to say. And
then what happens is that's Shatir. That Shatir, channel, right? हाँ. यार शातिर का जो तेरा intro music था ना मुझे बहुत पसंद है. हाँ, तो we're gonna use that for Dostcast as well again because yes, I was actually gonna mention this to you yesterday कि ये वो मुझे like that, it's just the right amount of like putting you in that zone, you know, because it's like nice and catchy. हाँ. तो मुझे बहुत पसंद है. It's the opening theme of a song by Bengali jazz. Bengali क्या बोलेंगे? Bengali बड़े क्लब्स की मशहूर टॉप की गायिका. Okay. गायिका रूपा. गाना शेयर करेगा मेरे आज शनिवार. लिंक आज शनिवार है. आज हम वो कर रहे हैं. हाँ वो लिंक हाँ वो कर देंगे. आज शनिवार है गाने का नाम. आज शनिवार है. आज शनिवार बंगाली में है ना. Nice. इसने एक एल्बम निकाली थी रूपा ने. शी इज एन ओल्ड आंटी नाउ. कनाडा में रहती है. बढ़िया अपना पैसे वैसे कमा के आंटी पूरा अपनी सास भी बन गई है. सारा सिस्टम है. 1982 में इसकी एल्बम आई थी जब ये एकदम टॉप की डिस्को गर्ल थी. उस टाइम इसने बनाई डिस्को जैज. 4 गाने हैं उसमें. ठीक है. 2 का मेरे को पता नहीं. एक का नाम है मौजा भरी मौजा. एक का नाम है आज शनिवार. तो कहती है आज शनिवार चलो नाच पे चलो यार. तो यही है गाना. और इतना बढ़िया गाना है कि मतलब मैंने सुना यार ये है. Then I was like, can we do this for our YouTube channel? And then I looked at copyright rules. So anything below 9 seconds you can. Achha, okay. So we use that. That's nice. It's quite nice. I really like it. Thank you. Yeah. In your new job with this dubious OTT platform, which will not be revealed, since you watch a lot of content, is there like a list? Do you make a list कि यार आज ये देखना है, आज ये देखना है, ये देखना है? तो यूजुअली जब मेरे कलीग्स हैं वो मुझसे थोड़े बड़े हैं और थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है. आई थिंक आई एम द यंगेस्ट इन द टीम राइट नाउ. तो ग्रेट वे टू टॉक अबाउट योर क्रेडिबिलिटी बाय द वे. No, why not? I mean, there's a reason why I am a part of that team, right? Because you bring in fresh ideas. Yeah. I'm more closer to the young generation, I would want to believe. So so there's always a bunch of things that they keep referring to, and I haven't seen that content. So I have a list like notes में things to watch, and I keep adding things to that. Like तुम्हें याद है जब फारूक शेख उस तरह वॉक करता था? Like नहीं. So like कौन? हाँ, let it be. That's fine. हाँ ठीक है. तो या लाइक यू मेंशन विनाइल के देखना चाहिए बड़े. तो मैंने वो लिस्ट में डाल दिया. मैं कब वो देखूंगी पता नहीं. पर देख लूंगी शायद. It's a great show. Anyone who's watching this, you should watch Vinyl because Vinyl. हाँ वो मैं भी पहले विनाइल ही बोलता था. विनाइल फिनाइल. It's just फिनाइल का राइमिंग है ना. क्योंकि ना I like how कितना subtly करेक्ट किया तूने मुझे. हाँ यही तो जादू है. उसके अंदर सीन है. Like I know कि बहुत सारे I've had, by the way, like it's very weird. Like I just always never had a manager, but so many of my friends are artist managers. मेरे college में roommate था. He was a he was a manager for like a local band, and वो अब काम भी उस चीज़ का ही करता है. But he showed me a film. There was this rock musician called Alice Cooper. उसका एक मैनेजर था शेप गॉर्डन. and he's very respected in circles. He kind of like made the music manager जैसा होना चाहिए ना. He established that. सुना हुआ है मैंने. हाँ. तो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है where he has his own island, and like I was very surprised to see a very genuine guy taking Alice Cooper's career to the masses. बोला कि तू बैंड से अलग हो जा, तेरा अलग ही सीन है, you know, band members are like fuck you, but eventually write for him. But what Vinyl does is Vinyl shows like someone who could not be a rock star but loved music so much that he became a manager. Yeah. And I'm giving I should not give the spoiler. It's so good. Never mind. You should watch it. Don't give the मैं वो spoiler नहीं दे रहा. spoiler. But certain things are done to make the artist become even more famous that no one might approve. And he does them all smacked out on cocaine. So he's like, he अपनी company बेच रहा होता है, but then he's like, you know, fuck it, we're going to rebuild this company. Like तू पागल है क्या? इतनी बढ़िया deal मिल रही है. That's the starting scene, so I can say that. Okay. It's like नहीं, I built this company on drugs. I can do it again. And that's what he does. But I was fascinated कि किस तरह से you can be unemotional and see what the artist needs to do to get to the next phase. Yeah. Personally, I was very inspired by Jerry Maguire. That's one movie that I was just... The movie with Tom Cruise, जहाँ पे वो he tries to get this semi-famous black athlete, baseball like, guy, ना? Baseball नहीं, football. Whatever. हाँ, football. उनका football, rugby जो. तो yeah, like over there, it's like he takes an artist जिसको कोई seriously नहीं लेता, and he's like, I'm gonna spend my time and energy to make this guy amazing. You know, and that's what I liked कि फेमस लोगों के साथ काम करना एज मैनेजर एंड उनको और पैसे दिलाना बहुत ईजी है. लेकिन यू गो विद द पीपल हु आर लाइक न्यू और हु
don't have that kind of a standing and you build them. I think that is what managers should be doing. कि तुम नया talent spot करो और then उनके साथ में तुम खुद भी grow करो. That I think that's something that I personally really liked about. Because you know कि there are several red flags in the sense कि recognition नहीं है ये वो है, so your skills also get unlocked. Exactly, right. Yeah. क्योंकि तुम then you are actually working on building something from scratch, right? And isn't that exciting? Like जो फेमस लोग हैं उनको तो सब पैसा फेंकना चाहते हैं उनके ऊपर, राइट? जो लोग नहीं हैं, जो न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, उनको वहां तक पहुंचाना, दैट इज व्हाट अ गुड मैनेजर इज. Are there any good managers that come to mind now that you know of personally or that you've seen in the public eye जो बहुत बढ़िया करते हैं? I hear good things about Bhuvan Mam's manager, for example, all the time. Rohit, yeah, he I think is a really great person. He I think he's done a good job. There's one more person, मैं उसका नाम नहीं लेना, लेकिन but I think ले लूँ? ले ले? नहीं लेना मैं उसका नाम. Initials use कर ले. नहीं यार, इतनी छोटी इंडस्ट्री में इनिशियल्स लूज कर. विराज की बात कर रही है? नहीं विराज की बात नहीं करी. चल ठीक है, मैं तो को ऑफलाइन बताऊंगी. ठीक है तो ठीक है, let's call this person X. Can we talk about who he manages? नहीं मैं वो इतना मैं बोल रहा हूँ ना. हाँ, क्योंकि मेरे को पब्लिकली नहीं बात करना है. अच्छा ठीक है, तो इंसिडेंट तो फिर आगे बढ़ते हैं. Any other person कोई और है ऐसा? हाँ, क्योंकि मैं बात करूँगी तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, मुझे नहीं बात करनी. पर No one else? नहीं. Okay. मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे नज़र में तो मैं बेस्ट मैनेजर थी हमेशा. But like do managers compete among each other कि यार तू ज़्यादा बड़े मैनेजर तेरे, हमने मेरे आर्टिस्ट को मैं 3 लाख का दिलाया, तूने क्या करा है? होता होगा ना. बहुत ज़्यादा भाई. एटलीस्ट मैं थोड़ी हूँ भी वैसे कि मैं बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हूँ इन लाइफ. तो हम तो आपस में बहुत करते थे कंपटीशन कि अरे तेरे आर्टिस्ट ने इतना कमाया, देख मैंने इतने में शो क्लोज किया उसके लिए. एंड लाइक हमने कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया थोड़ा. पर हाँ, सुन रहे हो दोस्तकास्ट के लिसनर्स, ये है सच्चाई दुनिया की. कभी भी आर्टिस्ट मत बनना, भूखे मर जाना. नहीं, हमने आर्टिस्ट को बेवकूफ़ कभी नहीं बनाते थे. हम हमेशा आर्टिस्ट के साइड रहते थे. हम क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बनाते थे. बहुत बढ़िया. कभी OML stonks right now. Oh shit. Right. ये काट देना. चलो ठीक है चलो. नहीं छोड़ रहे हैं. बट मतलब हाँ, करते थे यार, सब करते हैं. अभी मज़ा आता है ना कि अगर किसी चीज़ के तुम्हें 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, पर अगर तुम सामने वाले से 10 लाख रुपए निकाल लिए उसके, वो तो बिजनेस है, वो बिजनेस है. पर वो एंड ऑफ द डे है तो बेवकूफ़ बनाना ना, हराम का पैसा. This is a very thin line because at one point, okay, if you are in business, you assume that everyone else is in business. अब वहाँ तुम ये बोलोगे कि यार देख मैंने 9 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, there is nothing wrong in making profit. Are you ethical about it? Yes. Did you say कि यार मेरी ये cost, can you justify them? Yes. Correct. Is the सामने वाला बंदा बेवकूफ़ जो कह रहा है कि नहीं मेरे को तो 12 लाख भी मेरे को चाहिए, तो ठीक है आप दे दो 12 लाख, हम कर देते हैं काम. You know, it only makes sense. Yeah, maybe. हाँ, बेवकूफ़ बनाना शायद फिर मैंने गलत कहा. Because okay. पर यार ओवरसेल तो हम, मतलब वो तो वही बात है ना कि तुम पार्टी देख के अपना रेट बदलो, है ना. मैनेजर का काम तो वही है ना. अब ये लग रहा है कि इससे ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं, पर निकालो, वो भी एक काम है. वो करना वो पड़ता सब है. मेरे को बहुत मज़ा आता था. वो सब करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा. उसमें मज़ा है. मैं बताऊँ, जो आनंद बिजनेस करने में होता है ना, उसका कोई वो नहीं. जैसे आप उस काम को मेरे से 3 बजे करा लो, रात के कभी भी करा लो, मैं ऐसे करने में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ कि हाँ, क्योंकि पैसों की बात करना किसको पसंद नहीं है. हाँ. जो बोलता है मुझे पसंद नहीं है, जब सामने नोट देखता है सारे आर्टिस्ट गिरी निकल जाती है सामने. में आर्टिस्ट जो पैसे के लिए नहीं करता, आई एम नॉट गोना सेल आउट. मेरा फेवरेट डायलॉग था मेरे आर्टिस्ट के साथ में, उनको ये पता चलेगा तो वो शायद मुझे पसंद नहीं करेंगे इसके बाद. अब तो तेरे को जरूरत नहीं है ना, अब तो वो तेरे वैसे भी तलवे चाट रहे हैं ना, क्योंकि तू एक बहुत मशहूर कंपनी में काम कर रही है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार. मेरे आई वुड वांट टू से कि वो मेरे दोस्त हैं, इस करके वो मुझसे बात करते हैं. नहीं ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त हैं. ओके. फिर कुछ लोग हैं जो मुझे पता है कि मुझसे बहुत स्ट्रेटेजिकली बात करते हैं बिकॉज ऑफ वेयर आई एम राइट नाउ, एंड इट्स अप टू मी हाउ आई फिल्टर दैट आउट, राइट. बट यू डोंट माइंड इट. No, I don't mind it because it's a part of the job, right? Yeah. It is. It really is. It is a part of the job. Someone random reaches out to you and you watch their content, you would help them out. As a person that I am, yes, why not? क्या जा रहा है यार? अगर कोई मेरे को बोले प्रेरणा ये देख ले, इस पे फीडबैक दे दे, तो मेरा क्या जा रहा है, मैं दे दूंगी. हाँ, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ ना. अब वो मेरा ओपिनियन उनके लिए मैटर करता है, वो अलग बात है.
पर मैं आई एम ऑलवेज लाइक अगर कोई भी आर्टिस्ट मेरे को बोलेगा कि यू कैन हेल्प मी इन दिस, लाइक आई डू गेट पीपल मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि प्रेरणा मैं ये डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, क्या चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए, एंड आई डू गाइड देम बिकॉज वाई आई थिंक नॉलेज इज फॉर शेयरिंग, राइट. वो मेरे को एक बार फ़ोन करेंगे, 2 बार फ़ोन करेंगे, तीसरी बार वो खुद केपेबल हो जाएंगे वो कॉन्वर्जेशन हैंडल करने के लिए. I see. And does it ever become a hindrance in your life where people are always asking you advice, but you're always the agony aunt? Because like, are you getting 3 a.m. calls? So I enjoy career the attention, I would want to say. I see. नहीं यार, मैं ऑनेस्टली नहीं माइंड करती. मैं कभी ऐसे किसी पे चिड़ी नहीं हूँ कि यार क्यों मुझ पे डिपेंडेंट हो. तो you like being relied upon. No, but I would ideally want them to learn from the things that I'm telling them, and then not keep making the same mistakes. Yeah, exactly. Be capable enough to learn from the things that I am sharing with them, right? नहीं तो वो कैसे grow करेंगे? If they keep falling back on me for advice when it's not my job to give them advice, right? अगर मैं उनकी मैनेजर होती तो वो अलग बात होती, पर अभी मैं नहीं हूँ. मैं सिर्फ उन्हें हेल्प कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पता हैं जो उन्हें नहीं पता है, तो उन्हें मुझसे सीखनी चाहिए. वो दे शुड बी ओपन टू दैट. What's like an ideal artist to work with? Like what kind of a trait, personality traits make someone like an ideal artist? Yeah, I would say someone who's collaborative. What do you mean by that? That is very important. Where I see that there are a bunch of artists who don't treat their managers as their equals, and they feel like that these are the people who are working for me, but it's not. They're not working for you. They're working with you. It's very different. And the day you start giving your manager, and this is the thing with like when a company is managing you, right? Because the line is so thin कि मेरा manager है कौन? मेरा manager जो company का CEO है वो मेरा manager है, या जो team का head है वो मेरा manager है, या जो actual manager जो जिससे ideally मैं दिन में एक बार बात करना चाहिए वो मेरा manager है. तो वो problem in a company आती है. तो आई फील लाइक कि जो तुम्हारा वट एवर योर डे टू डे मैनेजर है उसको अगर तुम एज एन इक्वल ट्रीट करो तो दे विल ऑल्सो फील मोर वैलिडेटेड टू गो आउट देयर एंड मेक थिंग्स हैपन फॉर यू, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स देयर सक्सेस ऑल्सो. लाइक व्हेन आई वाज अ मैनेजर एंड आई वुड क्लोज अ डील फॉर एनी ऑफ द आर्टिस्ट, आई वुड ऑल्सो फील हैप्पी बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स माई सक्सेस दैट आई वाज एबल टू. How do you become a manager in the first place? It's Wow, I don't know. That sigh really just said. I really don't know. No I think it's something that can be trained, honestly. But you did not do a degree in this. I'm sure there is some artist management course somewhere. It's like saying entrepreneurship की degree कर रहे हो, like. हाँ, पर मुझे लगता है कि कुछ काफ़ी चीज़ें ना बहुत इंस्टिंक्टिव भी होती हैं कि तुम्हें बिजनेस पता होना चाहिए, तुम्हें नेगोशिएशन आनी चाहिए, प्लस तुम्हें थोड़ा बहुत क्रिएटिव फोरसाइट. ज़रूरी नहीं है कि हर मैनेजर क्रिएटिव भी हो. That is not very important, but I feel like it's good because then you contribute to the artist in a lot more ways rather than just numbers, business, ये वो perception. नहीं, पर तुम अगर perception क्या चल रहा है यार? अभी ना मार्केट में तेरा अच्छा नाम चल रहा है, तो इसको तेरा कुछ कर इस पे. करते हैं, इसको थोड़ा और बिल्ड करते हैं. अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो कुछ हम करते हैं कंट्रोवर्सी, वैसा टाइप्स का. I love controversies. यार मैं तो ट्रूली बिलीव करती हूँ कि no PR is bad PR. अगर तुम्हारे बारे में 4 लोग बातें कर रहे हैं, चाहे अच्छी बात कर रहे हैं, चाहे बुरी बात कर रहे हैं, चाहे गाली दे रहे हैं, अगर 4 लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं तो वो तुम्हारी विन है. मैं इसमें एक्चुअली बिलीव करती हूँ. क्या हो गया भाई? PR. Can I use this as a reel? No. See what I mean? Nice. Yeah. I mean, you know who I learned this from Puneet Superstar. Really? Yeah, he's become a content mentor of sorts. Never expected it. You have to do crazy things. Shock sells. Yeah, I think more than shock. Maybe you can call it shock. I think surprise sells. Surprise, right? Shock is like shock is more extreme. More extreme. But surprise, and that's what a lot of comedy also is, right? कि तुम एक अगर मैं प्रेमिस लेके चल रही हूँ और जब मेरा पंच लाइन पे फ्लिप आता है वो सरप्राइज तुमने नहीं देखा तो तुम उससे हंसते हो. तो आई थिंक सरप्राइज रियली सेल्स इवन इन लाइक से अ शो और अ मूवी. यू आर लाइक कि ये है, इसने मर्डर किया है, इसने मर्डर किया, इसने मर्डर किया, पर नहीं उसने मर्डर किया है. दैट सरप्राइज इज समथिंग दैट really sells. स्कूबी-डू में भी ये होता था ना, याद है लास्ट में वो उसका मास्क निकालता था, फिर एक और मास्क निकलता है, फिर एक और मास्क, ओह मैं ये हूँ एक्चुअली, अरे वाह हमें तो पता नहीं था, हम चूतिए हैं बहन. फ्लिप पे फ्लिप. हाँ, इवन CID की थप्पड़ मारा है, नहीं जी ये नहीं, कई थप्पड़ों का पता लगता है कि एक्चुअली वो लड़की थी. ओहो जी सॉरी यार. पर लेकिन यही बात है कि CID वाइडी में तो अभी उसमें से आवाज आ रही है. हाँ, मेरे को अच्छी लगी आवाज.
हाँ अच्छा इसकी गिटारिंग मत कर प्लीज. हाँ मैं यूकेलेले बजाती हूँ, गिटार नहीं. क्या बात है. आईजी रीलर तो नहीं हो आप? You know, people used to play ukuleles on IG genuinely, but now people play it ironically, a lot of them. Oh really? That's also become a trend, no? कि like you're मेरे को लगता है अगर लोग सब कुछ ironically करेंगे तो फिर वो मेन स्ट्रीम हो जाएगा ना. और क्या वो really irony रहा? मैंने राजा गुजर जी के साथ ironically इंटरव्यू करने गया था, बट मैं रियल हो गया. वो हो ही जाता है. I think you can't because it's so hard, no? Ironically, like okay, when you declare कि तुम मजाक में कर रहे हो, तो it's just I don't know, like what? Either don't declare it, you know, like oh मैं ironically कह रहा, मैं ironically थप्पड़ मारा. Anyway, yeah, it's weird. मेरे को लगता है चीजें करके बोल दो मैं ironically कर रहा हूँ, तो you can get away with a lot of things. Yeah, but it's not that strong a statement. Like तुम बोल सकते हो कि जैसे मेरे को mental disease है, like ओह कोई बात नहीं. और ऐसे बोलते हैं ना कि हर किसी को थप्पड़ मारता है, बट ही इज सो क्यूट, ही तो ऐसा ही है. लाइक दैट वर्क्स मोर देन सेइंग मैंने आयरॉनिकली करा, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि हर कोई समझेगा. मतलब ट्विटर पे जो बंदा एंग्री है, जिसको ये पता है कि तुमने फालतू कैसे बोल दिया भारत के बारे में, उसको मैंने कहा यार नहीं मेरा आयरॉनिकली नॉट गोना वर्क. उसको घंटा फर्क पड़ रहा है आयरनी क्या होती है. आयरनी अगर ऐसे पता होती ना तो आज हमारे इंडिया में पॉलिटिकल कॉमेडी चल जाती. दैट्स द रीजन व्हाई इट डज नॉट वर्क. दैट्स द रीजन व्हाई कॉमेडियंस आर quitting comedy, going to jail because they're the last truth tellers और सच्चाई बताने नहीं दे जा रही उन्हें, which is sad really. Just why I kind of more hopes from reelers and stuff. कि वो सच्चाई बताएंगे? नहीं sorry, like you know like थोड़े Instagram comedians वगैरह at least in that small domain of memes, वो छोटे हैं, underground community है, but they're able to say a lot more. A comedian doing a professional show does not have the same liberty anymore. No, but I feel like that it depends on who the comedian also is, right? If you're a smaller comedian who is not as big as the people who are being targeted right now, you could still get away with it. है ना? क्योंकि not that many people are listening to you. Yeah. You think that there aren't other comedians who are doing political content? They probably are. Maybe we aren't listening to them. That's true. But I think this is what I want to talk to you about. Is, for example, you might have also seen when you were working at OML, several comedians' careers going from like 1 to 10. Mm-hmm. And I've seen go from 1 to -5 also. Really? In both circumstances, what is it like? Do people come in and say, I'm overwhelmed with all the response? Does it get to their head? How do they then कि oh यार अब हम ना इस स्टाइल पे आ गए हैं, इसलिए अब से ना सब कुछ सोच समझ के बोलना. Do you have those conversations as well? Yeah, वो तो होता ही है क्योंकि अब मतलब थोड़ा and I think it's not about comedians. तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा क्लाइमेट ना लास्ट 3 साल में ना कंट्री का बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. तो पहले you could still like I don't want to say get away by saying things because ये ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं जिससे तुम्हें get away होना चाहिए. ये चीज़ें हैं जो तुम्हें genuinely बोलनी चाहिए. अगर तुम्हारे पास पावर है लोगों को बोलने का तो तुम्हें तो ये चीज़ें बात करनी चाहिए ना कि कंट्री की हालत कैसी है यार. right. जिनको नहीं पता उन्हें बताना रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी. तो पर मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि जैसे लाइक अगेन लाइक अगर तुम्हें इट्स अ विच हंट राइट कि वो वेट कर रहे हैं कि तुम कुछ गलती करो तो हम तुम्हें टारगेट करेंगे. तो उसके वजह से चेंज ज़्यादा आ गया. मुझे लगता है कि अगर वो शायद क्लाइमेट नहीं होता तो मे बी लोग स्टिल करते जो उन्हें करना है. Like, is that making sense? It is making sense. Yeah. It's like I feel like now I sit in rooms with people that conversation is like यार ये तो नहीं बोल सकते. और क्यों नहीं बोल सकते? Not because वो चीज़ funny नहीं है या वो चीज़ बोलनी नहीं चाहिए या politically not politically but incorrect चीज़ है या insensitive चीज़ है बोलने के लिए. वो रीज़न नहीं है कि अगर हम ये बोलेंगे तो वो हमें टारगेट करेंगे. इस करके चीज़ें नहीं बोली जा रही हैं. नॉट बिकॉज के लोग ऑफेंड होंगे, वो तो बहुत साइड की बात है. लोग तुमने कुछ जब तक तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि इससे कोई ऑफेंड होगा कि नहीं होगा. राइट. लेकिन तुम्हें पता है कि अगर लोग ऑफेंड नहीं भी हुए तो भी लोग तुम्हें टारगेट करके इसे ऑफेंसिव बना देंगे. तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सैड लगता है कि लाइक तुम्हें हर चीज़ कुछ भी करने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना है कि ये मुझे मेरे करियर मेरी फैमिली मेरे आसपास के लोगों को कैसे इम्पैक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि देयर आर पीपल सिटिंग एंड लुकिंग आउट फॉर यू टू मेक अ मिस्टेक. That I wouldn't want to be in that. That's place. crazy. Like the level of pressure. It's insane.
It's really insane. Mentally तो like मतलब यार लोगों के पता नहीं 10-10 साल पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स अगर वायरल हो सकते हैं कि भाई ये देखो इनने 10 साल पहले क्या बोला था यार. 10 साल पहले सबने क्या क्या बोला था. इतनी जल्दी कैंसिल होऊंगा अगर मैं बहुत फेमस हो गया इतनी जल्दी. मेरे डेली के ट्वीट ऐसे होते हैं. वही तो. एंड बट देयर इज नो सोल्यूशन बिकॉज यू कैन नॉट होल्ड योर एंटायर लाइफ अकाउंटेबल टू द फैक्ट कि तुम एक white knight थे या तुम एक धूत से धुले हुए थे. You're going to make mistakes and say stupid things. It's okay. You're a comic for God's sake. You're supposed to make bad jokes every now and then. Forget comedian. Even a person. Like I am not the same person I was yesterday. Yes. Whatever experience that I had yesterday has changed me today. The way I'm thinking, the way I'm talking. Right. तो how do you expect कि people 10 साल पहले जो चीज़ बोल रहे थे वो आज भी सेम चीज़ बोल रहे हैं या कर रहे हैं या whatever, you know? Yeah. तो वो तो है ही. But do you think we will eventually see something like a paywall where people can, because मेरे को लग रहा है shows में लोग आज भी बोल पा रहे हैं. लाइव शो अटेंड करा है मैंने जो भी बार. It's so much more entertaining. Not because मेरे आसपास लोग हंस रहे हैं, but the content itself. अरे यार लाइव शो का एक्सपीरियंस हमेशा से 1000x better होगा than watching it on a screen. 110%. वो definitely होगा because it's a community watching experience. Yeah. You are sitting with 500 people or whatever, 150 people and experiencing something. Obviously, that's going to be much better than you sitting alone and watching a screen. Right. It'll always be there. Like I feel movies. Like there was a time when I used to watch a movie every Friday. मैं हर फ्राइडे एक पिक्चर देखती थी. और फ्राइडे को रिलीज होती थी सारी. हाँ पिक्चरें लाइक इंडिया में तो एटलीस्ट फ्राइडे ही होती हैं पिक्चरें. तो मैं हर फ्राइडे एक पिक्चर देखती थी. एंड दैट एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन अ थिएटर with like 300-500 people and experiencing those emotions collectively. कि अगर स्क्रीन पे बंदा रो रहा है तो तुम्हें रोना आ रहा है, तुम्हारे बाजू वाला कोई एक रैंडम पर्सन बैठा है वो भी रो रहा है. अगर वहाँ पे वो किसी को मुक्का मार रहा है तो तुम खुश हो रहे हो, तुम उसका जीत सेलिब्रेट कर रहे हो एज अ कम्युनिटी. दैट्स जस्ट अमेजिंग एंड दैट एक्सपीरियंस विल ऑलवेज बी बेटर. That experience will always be better than watching something alone sitting in your bedroom. Yeah. For sure. I mean, when I watch shows, they also dim the lights, right? So you're not conscious of laughing at something that's inappropriate. Yeah. That's how. If you see, like comedy clubs always have very uncomfortable seats. They don't have armchairs. They're not supposed to. I mean, if you've been to a traditional comedy club. I've just been to that canvas. I saw a Rahul Subramanian show way back when. And then I've seen a bunch of amphitheater shows in and around Faridabad, and then maybe like a couple in Delhi. Okay, but like a traditional comedy club, if you go to which place is built and dedicated to comedy, you'll see the seats are narrow. You don't have armrests, so you can't get comfortable. So you're always attentive to what's happening on stage. I'm sure that's a deliberate decision they make, right? It is. It really is. क्योंकि अगर तुम रिक्लाइन करते हुए बैठ रहे हो, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ सुस्त होके, तो मैं बोलूँगी हाँ भाई हंसाने की कोशिश कर मुझे. पर वही मैं अगर अटेंटिव बैठी हूँ, मैं फिजिटी हूँ, and my attention is on what's happening on stage all the time. I'm not too comfortable. Yeah, I think अगर तुम रिक्लाइन करके बैठे हुई हो ना, by default you're going to heckle as well. Yeah, क्योंकि तुम ऐसे हाँ तू है comedian. और ये चीज़ मैंने दिल्ली में ज़्यादा शोज देखे नहीं है, पर सारे comedians मुझे यही बोलते हैं कि दिल्ली की ऑडियंस ज़्यादा हेकल करती है. And they're all like हाँ चलो सुनाओ. मुंबई वाले थोड़े सॉफ्टी भी तो है ना. नहीं सॉफ्टी की बात नहीं है. मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद मुंबई एंड आई थिंक साउथ ऑफ बॉम्बे लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि कोई बंदा अगर यहाँ पे आया है तो हमें इसकी बात सुननी चाहिए. वैसे मुझे लगता है दिल्ली के लोग थोड़े बदतमीज है ऑडियंस वाइज. हो सकता है. I know for a fact when I watched Anubhav Singh Bassi's cameo on Tanmay Bhatt's vlog when he first started, and he was saying कि उसके शो में किस टाइप की हैकलिंग होती है, you know. And I'm sure if I know what vlog you're talking about. And if this is what the Delhi crowd feels like, then I'm sure कि और cities के अंदर जाके, like I've heard things about Noida shows being crazy. हाँ मतलब when I say Delhi, I mean the NCR region of whatever. But it's just Noida. I also think here in Mumbai people are just used to all aspects of show business. You know, they're used to seeing people perform. Yeah. In Delhi by default, performance and comedy culture भी अब जाके आए. It isn't as like most people are coming to see a comedy show for the first time because they saw someone on YouTube. Yeah. Versus you actively following a comedy club somewhere and then going and seeing a performer. You know what I mean? पर मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई स्टेज पे खड़ा है माइक के साथ में तो तुम उसे इज्जत तो दोगे ना कि तू अपनी सेंटेंस खत्म कर ले.
हो सकता है नहीं. हमने जो ओपन माइक करा हमें बहुत इज्जत मिली थी. फिर मानिक ने थोड़ा रोस्ट करा था, which was nice. Manik is amazing. Bro, he does not do a fucking podcast with me. I messaged him. Why? I haven't spoken to Manik. You should totally tell him to do a podcast. I'll text him. And first thing I'll be like, please come on those. हाँ, बहुत अच्छा रहेगा. Because he is so funny. Manik is amazing. That man's brain genuinely amuses me. Like, if I could just understand कि इसके दिमाग में regularly क्या चलता है. He does no public appearances though whatsoever. He never comments on his Instagram. He doesn't even reply to his tweets. He has no videos out. और लोग बोलते रहते भाई वीडियो कब आ रहा है, हम मर रहे हैं. डाले हुए हैं उसने थोड़े बहुत तो. 3 videos डाल रखे हैं. Sold total of 3 videos on his channel. Yeah. But people keep messaging and stuff. Maybe he's reclusive like that, but him and even Sumit Anand, they're both like the duo of and Sumit does great English comedy, which it was so. मेरे को लगता था यार ये मेरे को मतलब ये सब boring लगते हैं. But when I saw Sumit Anand, I couldn't help but laugh. One of my friends was heckling Sumit Anand so hard because he was drunk. अरे वो यही तो प्रॉब्लम है यार. इज्जत दो कमेडियन को जब वो बात कर रहे हैं. हैकल मत करो. हैकल करने का टाइम होता है. अच्छा होता है वो तुम्हें जब वो बीच में अगर उनने पॉज ले लिया ना तो फिर तुमने हैकल कर दो ठीक है, पर जोक के बीच में हैकल मत करो यार. अब हम बात कर रहे हैं, कोई कुछ वहां से बोलेगा तो तेरा ट्रेल ऑफ थॉट चला नहीं जाएगा कि तू क्या सोच रहा था आगे बोलने को. दो कॉमेडियंस का आई थिंक काफी कुछ मसल मेमोरी भी होता होगा अब तक, क्योंकि सेम जोक बार बार करके आई एम श्योर. पर फिर भी कि तुम अगर मतलब तुम्हारा रूटीन किसी ने ब्रेक कर दिया ना, वो मत करो. I see. Yeah, but you know, it's also heckle मत करो guys. Some comedians have a great way of turning that back on the heckler. Yeah. And they use the entire crowd to shit on that one person, so they stop. Because that one person is spoiling the experience of everybody else, right? क्योंकि उनको वो 2 मिनट का फेम चाहिए कि oh my god ये comedian मेरे से बात कर लेना चाहिए. You know? There is a famous audio of Bill Burr heckling an entire audience of Philadelphia. Yes. उसका दिमाग खराब हो कि तुम सब हरामी हो, तुम्हारा शहर भी घटिया है, तुम सारे घटिया हो. ये कहाँ आज ही कहीं सुना तूने ही पहले ये बात? नहीं, I've never mentioned it. अरे आज तन्मय ने, मैं आज नहीं बोला तन्मय ने, मैं तन्मय का एक वो चलचित्र टॉकीज का वीडियो right. And he spoke about exactly the same thing, that it was a long comedy night and Bill Burr came very late and the audience were tired and they weren't in favor of like whatever Bill Burr was saying, so he shat on the entire fucking city, Philadelphia. Yeah, this exact same he was talking and about. And he didn't do shows there for a while because everyone was like, fuck this guy in particular. Oh, okay, that I don't know because Tanmay said that the audience was with him by the end of it. So yeah, of course, because यार देखो एक क्या होता है ना, I think performers are always at the mercy of the audience. Yeah. Bill Burr is a guy who generally does not give a fuck at all, so he's like यार छोड़ो तुम सब ऐसे ही कराओ. He's always hated on and in a lot of ways he's able to sort of get by. जैसे जो डेव शपेल को हम बोलते हैं ना, लोग ध्यान से देखते नहीं, बिल बर इतनी उल्टी बातें बोलते चला जाता है किसी को पता भी नहीं चलता. He says so much horribly funny shit. वो बात है ना कि तुम कैसे बोल रहे हो वो भी ज़्यादा काफ़ी मैटर करता है. कुछ लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये उनने बोला है, और जब तक वो सोचेंगे कि ओ माय गॉड इसने ये बात कह दी, it's वो लोग शायद घर पहुंच गए हैं और खाना खा रहे होंगे. Yeah, his whole thing is his trope is he says the first thing that comes to his head. Okay. It's like sometimes you're making a joke, you're like यार तू पकोड़े का छिलका है, but it's like what? But it just he says it like that and then he carries it on and then he finds the joke somewhere, which is rare. Which is I think a lot of people cannot do that. Like one thing I wanted to ask you before we end off. Yeah. Some comedians I see funny only on stage, but they're not funny in real life, and I've met several. Why? Name like, one. अब मैं नेम क्यों बताऊंगा उनका? इस मुंह पे बोलूंगा तू फनी नहीं है, फायदा क्या हुआ उसका? नाम बीप कर देना चाहिए. नहीं तो इस कॉन्वर्सेशन के लिए नहीं. मतलब कि यार मैं किसी कमेडियन से बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे, मैं जोक मार रहा हूँ, उसने जोक मारा है, मेरे को हंसी नहीं आई. और मैं ये नहीं कर रहा कि सुन बहन करोड़े कमेडियन मेरे को हंसा कि अब मैं यहाँ बैठा हंसने के लिए. जनरली यू नो लाइक यू वुड नो, लाइक मैं और सतीश बात कर रहे हैं, मैं और तू बात कर रहे हैं, तो लाइक एक हंसी मजाक का सीन हो जाता है, यू नो लाइक कि हाँ हंसी मजाक चल रहा है ऐसे, लाइक इन दैट सेंस. सी लाइक some people is very serious. Really? Yeah. I don't know who, I mean most of the people that I have I think met or I know as comedians, they are just funny people. Okay. Maybe we've had different experiences. Maybe you met more. I don't know. Yeah. And it depends on the dynamic also, na? What was the setting when you met this other comedian? Yeah. Was it right after a show? I'm also basing this on a premise from Jerry Seinfeld. He said that the guys who are funny off stage are actually the funniest overall. Like, you know what I mean? Like some people have a great stage act. Yes. But they're not so good at coming up with spontaneous jokes. Yeah. See, that's what I mean. It depends, right? Like most comedians I feel were the class clowns.
were always the funny people in the group and then they became comedians. Right. At least I feel so. And यार इंडिया में तो मतलब कॉमेडी कितना नया है यार. पिछले कितने 5, 7, 10 साल से शायद कॉमेडी लोग कर रहे हैं in this country as like a fucking job. Yeah. तो वैसे and I really feel like people who are genuinely funny like even off stage will always be funny on stage. Funnier than guys who perfected their stage act. Yeah. Because they're not trying too hard, right? Yeah. They're being themselves. If you want really funny content to watch, go watch Arun Gemini Haryanavi. कौन है ये? Arun Gemini जैसे वो नहीं होता, there's a whole culture जैसे भगवंत मान और ये राजू श्रीवास्तव स्टाइल का, but like they do mimicry and skits. Okay. अरुण जेमिनाई हरियाणा के सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ग्रीन स्क्रीन के सामने पीछे ऐसे कुछ वाइड चल रहा है, कुछ ऐसे ही मेक्स जोक्स एंड ही मेक्स जैसे एक उसका जोक है, एक बस चल रही होती है, लड़का लड़की बैठे होते हैं, तो लड़की का पैर लड़के के पैर पे गिर जाता है, तो लड़की बोलती है सॉरी, लड़का बोलता है थैंक यू. ठीक है. फिर उसके बाद सेम बस चल रही होती है, एक बुढ़ा होता है हरियाणा का ताऊ, और वो उसका पैर लड़के के पैर पे पड़ जाता है, तो बुढ़ा बोलता है सॉरी, लड़का बोलता है देख के नहीं जा सकते, बोलते मेरी सॉरी ये कि स्पेलिंग गलत है. बट वो जिस तरह के जोक्स हैं, he takes it from Haryana's hinterland and then he uses them and he says it on a screen. And पीछे तबला सा बजता है और वो थोड़ा सा वो लाफ आता है. But even if it wasn't there, the fact that you laughed and told you that joke, yeah. super funny guy. Nice. Yeah. So it's, but I don't think many stand-up comics would know about him. Haryana में there's also a talent called Ashok Chotala. उसके टांग में चोट लगी रहती थी, तो वो क्या करता था, वो एक टांग को लात मार के दूसरी टांग पे ऐसे से चल के यहाँ से वहाँ नचनिया किसी एक्टिंग करता था, आसपास उसकी टोली बैठी रहती थी और ऐसे ऐसी बातें करते थे. Is it supposed to be funny? You will watch it. It's super funny. Is it funny to us or is it supposed to be funny? No, it is funny. You will really, तो तेरे को पता लग जाएगा. मैं वो like it's like completely letting go of your persona absolutely and embodying this character 100% एकदम ही. और it's just always funny क्योंकि इसकी एक टांग में दिक्कत है, तो उन्होंने उसको जोक बना दिया. एंड वो वॉक ऐसे करता है जैसे कोई खिलौना चल रहा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, और ऐसे करके जाता है. But yeah, it's just something I discovered through my dad, who's also a fan of comedy, but regional comedy. इसलिए मुझे पता चला. So now when I watch these comics, जब वो English वाली वो करते हैं, I love it, but I always get intellectually stimulated here, not here. Yeah. And we know humor is subjective, so like वो, so all I'm saying is like people have this problem, like they feel like everyone should love Karan Gill or love comedians that everyone else thinks are cool. But अगर तुम्हें कोई 2 पैसे की घटिया गालियों वाली शायरी पसंद आ रही है, तो why not? Yeah, मैं भी यही बिलीव करती हूँ. मुझे लगता है कि अगेन एवरीबडी, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि ह्यूमर इज सब्जेक्टिव, योर क्रिंज इज माई कॉन्टेंट, ये सब चीज़ें बहुत होती रहती है. बट आई स्टिल फील इफ समथिंग इज फनी इल ट्रैवल, तो वो फिर ये बैरियर्स निकल जाते हैं कि ह्यूमर सब्जेक्टिव है. अगर कुछ जेन्युइनली फनी है, yes, it'll be mostly universally funny. Like we can all agree Mr. Bean was funny. Yeah. No one will say this is not funny. हाँ, I want to meet a person जो says कि Mr. Bean funny. It was so, and he was consistently funny. Yeah. All उसकी acting and no words. Yeah. Never any words. Just his face. Exactly, like just expressions and like situations that he put himself in. Yeah. Just funny. Mr. Bean का वो वाला देखा है, उसको जब उसको ये करना होता है कि मेरे को गाड़ी नहीं चलानी, तो अपना सोफा अपनी गाड़ी के ऊपर डाल लेता है और वो वाइपर वगैरह डालता है. Just this shit he does. Yeah. Fucking crazy. Yes. Anyway, Prerna, it's been great having you on Dostcast. Thank you. I hope तेरे को एक रील मिल गई हो इसमें से जितना. हाँ यार, तूने ये रील के लिए तो करा नहीं, इसलिए ऐसे मत क्या. You know, but we are at 1.5 hours, so you can actually go watch it, because you said कि ये podcast लंबा होता है. नहीं, पर मैं हाँ मतलब लंबा, I think लंबा I don't know, I'm just pulling your leg, मैं करूँगा 2.5 घंटे के. नहीं तू कर, मतलब obviously तेरे को लगता है कि 2.5 घंटे करके मजा आ रहा है तो तू कर यार. ऐसा मैंने रियलाइज करा है, मैंने ये स्ट्रेमलेसली जो रोगन से सुना, तो मैंने कहा इसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि 1 घंटे 45 मिनट के बाद ना बढ़िया बातें होती है. इट्स ट्रू. तो फिर हम क्यों बंद कर रहे हैं क्या बढ़िया बातें? तेरे को नहीं लगता कि मैं बढ़िया बातें कर सकती हूँ? नहीं कर सकते. जब तू दिल्ली आएगी तो आराम से स्टूडियो वाला करेंगे, because this setup is a bit like it's a bit portable, but it's been great having you on Dostcast as your I guess the 3rd or 4th listener who's been on this podcast, who's actively
spread it so much. I really appreciate it. Thank you. Great organic marketing. And you know, do you want people to follow you? Like, where can people follow you if at all? They can follow me on Instagram if they want. Yeah, your username is PKHo. PK Oho. Oho, what's a PK? Oho. Oh, yes. Nice. Yes. Mental joke. Okay. So yeah, cool. And we'll see you in the next episode. Of course, if you have do people want advice from Prerna? I guess you can DM her. Yeah, मैं usually अपने DMs देख के reply कर देती हूँ. Unlike me. Okay. Bye. Bye guys.